you click a picture of your dick and you send it to a random person. Randomly? तुम किसी को भी कैसे भेज सकते हो? I can't send my. Have you sent dick pics? I have. मतलब मेरे घर पे चूल्हा भी नहीं था, पेपर सिर्फ था मेरे पास। Dude, if the Google Maps are showing कि straight जाना उसने left ले लिया, मेरी तो वहाँ फट जाती। मैंने कहा भैया आप सीधा चलो, आपने क्यों बदला? मैं लड़ लेती हूँ उससे क्यों? Being in a red flag वाला relationship is more like investing in Bitcoin. ठीक है? Dude, I have this thing of laughing at weird situations, man. No, it doesn't mean that this is fucking hilarious. भाई अंदर मेरे को खतरा लग रहा, बाहर तो मेरी out of syllabus. Welcome back to the first podcast that is not on Spotify and is recorded without expensive mics. If you are having a bad day, please remember life is like stonks. It goes up, it comes down, but it always bounces back up. Today we have with us Akansha Pushp, who is the veteran furniture of OK Tested. I'm so sorry. We have with us Niharika Singh, who's a producer and is Tanmay Bhatt ke shabdon mein stressor OP. Last but not the least, your favorite cuddly character, Oscar winner anchor Kanishk Priyadarshi. And यहाँ पे 4 लोग की जगह है, मैंने एक इंसान की जगह को थोड़ा खा रखा है, इनको भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम इस पॉडकास्ट में पुराने एंकर्स को लेके आएंगे। एंड टुडे वी हैव विद अस द prodigal returning from the dead ashes of IQ quizzes. We have the best pun generator, the most curly person I've ever known, Karl Muhi, aka Arushi Kapoor. What is that? Oh my God. Hola, आजा। अरे यार, what is that? Welcome, please. She wanted to hug me, कुत्ते। अगले पॉडकास्ट में आउट। यार वैसे बड़ी मुश्किल से आई है यार आरुषि भाई, बड़ी मुश्किल से। My payment was drinks. यार actually this is actually a barter system. उनको not paying, but thanks man. आरुषि हम जानना चाहते हैं कि आरुषि इतना टाइम हो गया आपको अपने क्विज़ेस इतना टाइम से नहीं कर रहे, तो what is the capital of Azerbaijan? What the fuck? Yeah. What is the capital of Azerbaijan? really rusty है। नहीं अब बताओ। I'm not prepared for this. आप कुछ भी बोलते मेरे को पता थोड़ी है। अभी अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई हुई ना? हाँ यार, ये ऐसे डोंट पुट मी इन द स्पॉट यार। आई केम फॉर मैं दूसरा सिलेबस प्रिपेयर करके आई हूँ, ये अलग है। So ये सच्ची कमाल। में आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। So today we're going to talk about toxic relationships, dick pics, and I'm so sorry, मतलब I had to, man. I mean, it's an interesting conversation to have. इसलिए इसने इतनी सारी लड़कियां इकट्ठा क्योंकि डिक पिक इसको तो कोई भेजता नहीं। अरे मेरे को भी आया वैसे भाई। तेरे को आया है? तूने कभी भेजा है? मैंने कंसेंट के साथ भेजा है, हाँ। एक ही बार आई थिंक, शायद। My only question is कनिष्क, तूने सबको देखते हुए सब कुछ बोला, डिक पिक बोलते वक्त मेरे तरफ क्यों बोला? देखा ये बता। मेरे को निहारिका से इसलिए डर लगता है ब्रो, इससे मेरे को इसीलिए डर लगता है। ये स्टार्ट होने से पहले इसने एक पैक मार दिया है। ओए शट अप। ओह माय गॉड। पहली बार प्रोड्यूसर को इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मौका मिला बैठने को ऐसे, तो बेचारी पूरा फायदा उठा रही है। सही में भाई, आते ही मशीन गन कैली बन गई है भाई एकदम। बट नो टेल मी, जैसे तूने अभी बोला कि तूने भेज रखा है, ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड इट बिकॉज आई नेवर फाउंड लाइक कि मैं वजाना की फोटो खींच के भेज दूं किसी लड़की। या नहीं, बट द थिंग इज इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट डायनामिक ना। यू सेंड इट, इट्स स्टिल लाइक I mean it's different with men. Dick pics is like a power move. It's a power move. It's a power move, right? ले मेरा like that. मैं सही बताऊं तो लॉजिक तो मेरे को भी एक्चुअली समझ आता नहीं है कि मतलब what is the logic कि मतलब you click a picture of your dick and you send it to a random person. But I feel अगर आप अपने पार्टनर को भेज रहे हो, गर्लफ्रेंड को भेज रहे हो, इट्स फाइन। Randomly तुम किसी को भी कैसे भेज सकते हो? I can't send my. Have you sent dick pics? I have. You like pass them on. इसको भेज दे, इसका एक ग्रुप बना दे ब्रो, और सब एक दूसरे को। I'll tell you. So in our girlfriends group, if someone receives it, हम तो भेज के मजाक उड़ाते हैं उसका। इसका कितना छोटा है ब्रो, क्रिसमस जैसा है। मेरे उस ग्रुप के लिए मेरे पास नाम भी है, पेन इज द मेनिस। Here he is Arushi establishing the baseline for the podcast. The pun game is on. But ये सही बात है, पावर मूव की बात है, बट तूने कभी ऐसा हुआ कि तेरे को डिक पिक मिला हो, तूने देख के बोला क्या पावरफुल डिक है यार? I mean just I want to throw my phone when I see it. It's actually ugly, man. I would never want to see a fucking dick. I mean, mine is like baby. Neither do we. That's the thing. पता नहीं क्यों, and it's not like a कि ठीक है, specific strata of men send dick pics. I've heard all men send dick pics. Like even जैसे तूने consent से भेजा,
तो मतलब ऐसे नहीं कि बहुत नहीं मेरा तो बार्टर था, मैं भेजूंगा तू भेज, तो आई एम इसको पोस्ट ऑफिस के तू पोस्ट ऑफिस दिखा, मैं लेटर देता हूँ। सॉरी ब्रो यार नहीं मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए तो इट्स अ मेनस्टे। हाँ, then तो- मतलब देन तो यू नीड हाँ यार, long term लेन-देन चलता रहता है। हाँ तो वो वीडियो कॉल वगैरह तो Tell me मतलब about it. Tell me about it. तेरा लेन देन चलता है। But what was your first reaction when you received first dick pic DM? Like disgust. Like first reaction of. You discussed it with somebody? Disgust. अच्छा, Disgust. Sorry, you're gonna discuss. For some reason, when I received it, I was like 18, 19, and my Insta profile was open. And when I received it, I don't know what happened to me. I felt that I have done something wrong, and मैंने अपना account private कर दिया, ठीक है? And I felt so weird about it. मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे वो करूँ. I started crying for some reason. I started crying and I was like मैंने कुछ गलत किया तभी ये मेरे साथ हो रहा है, ठीक है? That is because of some trauma past, ठीक है? Anyway, but yeah. And now, when I receive it, I just say, dude, yours is too small for me, man. You can't. But what if it's actually big? It's not. I'll tell you. I have just like मैंने ये observe किया है, जितने भी लड़के भेजते हैं, उसके साइड में कुछ पड़ा होता है. अच्छा मेजर कर Bro, सिलिकॉन की बॉटल है सामने। नहीं हम तो मजा देखो पहले शी इज वेरी राइट इनिशियली जैसा कि इंडिया में जैसा लड़कियों को रेज किया जाता है कि समथिंग लाइक दैट हैपेंस टू यू इट्स समहाउ योर फॉल्ट, तुम्हारी गलती है साले। तो पहले वैसा लगता था बट नाउ सिंस वी आर मैच्योर वो मिलता है ना तो मजाक ही उड़ाते हैं, ठीक है? फिर 4 लड़कियां बैठी है पक्का मजाक उड़ेगा। इफ यू एवर सेंड अ डिक पिक, अगर किसी लड़की को 25 ऊपर की किसी लड़की को भेज रहे हो जस्ट नो दैट फ्रेंड सर्किल Yeah, you're not just sending it to her, you're sending it to the entire Yeah. group. and they're gonna make fun of it. Wow. Yeah. they were roasted, bro. Wow. No, so I tell you like me. somebody I'm sends sure कि us मेरा the- वाला was जो कंसेंट से नहीं भेजते उसकी बात हाँ, है। that one. Yeah. नहीं mine is still well kept somewhere. नहीं नहीं जो कॉन्फिडेंस में भेजा इट्स अनफेयर यार। आई विल नॉट बी हैप्पी इफ आई सेंड समवन न्यूड्स कॉन्फिडेंस से लाइक बात करके एंड वो अपने दोस्तों को दिखाए। इफ आई एम नॉट गोना बी ओके विद दैट आई एम नॉट गोना डू दैट विद अ डूड हु सेंड। पर किसी ने बिना मांगे अगर अनसॉलिसिटेड है तो उसका मजाक उड़ेगा। उसका तो बनता है, उसका एक्चुअली बनता है। होता है। Also, I feel when they send it, अगर आपने रिप्लाई किया जैसे आई रिप्लाई yours is too small for me and what not, अगर मैंने गैप छोड़ दिया उसको ब्लॉक करने से पहले उसका मैसेज आ गया, it will be full of abuses for sure. I know it. They will point out about my character, bro. You are the one sending me your dick pic. How my character is loose? What the fuck, man? So they do that. I don't get it. अगर मेरा तो ये होता है जैसी मैसेज भेजो बट मैं मैसेज तो भेज के ही ब्लॉक करती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू हर्ट देयर मेल ईगो. सॉरी दैट्स माई मोटिव. आई विल डू इट. व्हाई डिड यू अपसेट मी? व्हाई डिड यू अपसेट मी? इट्स वियर्ड. यू वेक अप, यू चेक योर फोन, voila, morning. Makes sense, man. Stress Yeah. battle. I don't know. So try this, okay? So me and my friends do this. Go like, "What's up? Not yours." God damn, man. This is okay. So this is a very weird start, man. I want to start with this because मतलब ऐसे हुक आ जाता है, लेकिन कई लोग भाग भी गए होंगे, I'm sure. जैसे कि मैं कहा था चाची बच्ची से. Okay. तो अभी you guys are married to your long lovers and मैं उसका लॉन्ग के बाद क्या I know. Objective हो गया. Dick pic conversation. Sorry, हाँ. तो आप दोनों की अपनी सासू माँ से बनती है टाइस? मेरी तो बहुत बनती है. मेरी बहुत मेरी बनती है। genuine. Good scenes, Yeah, मतलब. yeah. I mean, I am very protective of my mother-in-law. She's lived a very sheltered life. तो बहुत ही she's innocent, almost like a child. Okay. ठीक है. और उनके दिमाग में कोई malice नहीं है. मेरी तो बनती है. बनती है. आरुषि जी आप? अरे बहुत बनती है. हम तो काफी कुछ करते हैं साथ जैसे में. मेरे को पता है but I won't say it. I won't say it. But I know. No, like we've been very pissed drunk together once. हमने एक दूसरे को उल्टियां कराई हैं. अच्छा. So we done that. तीसरे भाई मेरे को यार जिस दिन मैं आप और आपकी मदर इन लॉ पीते हैं ब्रो. Oh dude, she will outdrink you. Totally. हाँ? She'll She will, completely sure? Yeah. And she was fine. उनकी एक उल्टी हुई. मेरी पूरी गुड़गांव से नोएडा तक उल्टियां हो रही है यार. And she just did it once and she was okay. I'm like, what the fuck, dude? You are older than me. आपको तो ज़्यादा hangover होना चाहिए. This is so unfair. तेरा क्या सीन नारका? What's your scene right now? So by the way, she's a Gen Z. You're a Gen Z. टोकन जेंजी कोई था नहीं, लोगों ने मुझे उठा के ले आए. सही है एक्चुअली. Representation. चाहिए हम करना लोगों जरूरी था भाई. तो और मैं भी एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए ही बैठा हूँ. मेरे को कायदे से आई डिडंट वांट टू बी इन दिस पॉडकास्ट बट देन
I was like मतलब How does it feel, Kanish, to be the token woman? मुझसे पूछ अभी ओके टेस्टेड में कैसे? Oh yeah, you're the Akanksha today, basically. Okay. मतलब I feel fine, man. I mean, like, yeah, I like you. मैं सही बताऊँ तो यहाँ पे in this podcast I'm not here to add on anything. I'm just here for curiosity. I think I just want to know your perspective about things. You should have watched it, no? Watched what? The podcast at the end. But I also feel if we are saying something wrong, Yeah, yes. Sorry, what the hell, man? Yeah. so I feel if we are saying something wrong or maybe something you felt, you can tell us from the guy's perspective. Bhai, I am really very intimidated right now, bro. What the fuck is fuck? यहाँ पे ना अमृत को होना चाहिए था, bro, मेरी जगह. मैंने तो बोला था तू क्यों आ रहा है? मेरे को आकांक्षा और आरुषि ने बोला कि तू कर ले. मैं सिर्फ तेरे जैसा आई हूँ. हाँ, नहीं, वो भी नहीं होता हाँ, तो तो मतलब आपको then समझना it चाहिए था, आप दोनों तो दोस्त हो, मेरी भी तो दोस्त होनी चाहिए थी ना यहाँ पे. हम दोस्त नहीं हैं तुम्हारी. Wow, Niharika. Toxic relationship. Toxic ये friendship. लोग आई एम टेलिंग यू, ये लोग मेरे से सीनियर है, ये लोग मेरे को थोड़ा वो कर रहे हैं अभी. Like first day of college all over again. There was somebody who used to stalk you और ऐसा कभी कोई scene? Can I go? हाँ, you अरे you go. This is way back. I did not even know the meaning of stalker back then. I was in 7th standard. ठीक है? And it's not exactly stalker, but there was this guy who used to roam around on his bike in front of my घर, okay? It's like straight society. And उसका एक दोस्त उसकी बाइक पे पीछे बैठा था, वो होता था. अगर मैं उतर गई नीचे, मतलब कुछ भी सामान नहीं तो मेरे पीछे पीछे चलता था. 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, और आई थिंक मैं हमेशा से बचपन से ही थोड़ी सटकी हुई थी. ठीक है ठीक है. आई एम सेल्फ अवेयर ऑफ दैट थिंग. तो क्या हुआ, मैंने स्टेशनरी से कुछ कॉपी वगैरह खरीदी, मेरे हाथ में कॉपी है. नाउ आई एम कमिंग बैक, वो आ रहा है, अब वो मेरे को समझ आ गया वो है. मैंने पता है क्या किया, मैंने अपना पैर उठाया, लात मार दी उसके टायर पे, गिर गया वो नीचे. आई वाज लाइक यू डिजर्व इट बिच. आई डोंट नो यार, मुझे ये सब करके किक आती है. अबे ठीक है, मतलब मैं अगर बंदी होता मेरे साथ होता तो मैं तो हर दिन मतलब एक दिन में 3 लौंडे तो मारता हूँ मैं. मेरा तो ये होता. आई थिंक आई वुड हैव लाइक slapped and shit. But this is stalking, by the way, and this Yeah. happens a lot. And the thing is, now the period of time, because I was a kid back then, मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी. Now I have a little समझ आ गई है. So if I'm alone and one guy is like staring at me, looking at me, so I actually go and ask him what क्या चाहिए, क्या चाहिए bro. But if there are a group of guys, that's the time I'm like भाई भगवान जी प्लीज घर सही से पहुंचा देना. I actually do this. अंदर दिल में prayer बोलती रहती हूँ. और my mom, if it's too late, she keeps calling कि where are you, if you're fine or not. I keep telling her that mama सब सही है, सब ठीक है, I'm fine, I'm safe. But in my heart, I'm like बस भगवान जी आज घर पहुंचा दो टाइम से, मैं पक्का कल टाइम से घर जाऊंगी. मैं actually मुझे ऐसा फील होता है. Also because the place I stay is Ghaziabad. It's something, bro. Yeah, that makes Yeah. sense. Even you would not feel safe there. Then you say Ghaziabad. You guys तो like आप लोग तो मुझसे बड़े हो, काफी stalking scenes Stalking हैं. walking आपका कभी हुआ है कुछ कभी ऐसे कि पीछे कोई पड़ गया हो, कोई ब्लैंक कॉल मार रहा हो? Not that I know of. I don't know. Not यार मेरे बचपन से ही हो गया था रिलेशनशिप शुरू. यार मतलब guys have approached me. And मतलब sadly, okay, the one thing I'm against is, you know, women using a guy as a proxy, you know, when guys approach you and you're like, I already have a boyfriend, you know, that's like just, I mean, though that is like the go-to response, but you know, you shouldn't have to resort to that. You should just say I'm not interested. But ironically, that's the only excuse I हाँ, have. reason देने का कोई logic नहीं है ना. Yeah, If but you're not then interested, you can you're just say not- not interested, man. But Yeah. no, guys that generally don't buy that. But some Exactly. समझते नहीं. They Some- think they some can guy persuade a woman to change her heart and be like, I will make her fall in love with me. You would just see. तुझे मेरे से प्यार कैसे नहीं है? नहीं किसी 1-2 हरामी लड़कों के मुंह से मैंने सुना है. और उसको बोलो क्या भाई उसके पीछे क्यों पड़ा है, उसका बॉयफ्रेंड ने छोड़ दे. कहता है कि गोलकीपर हो तो गोल मारने का टाइम नहीं करेंगे. बोले चप्पल खाएगा, निकल यहाँ से. या मैं तो जैसे मैंने उस बार बोला था, मैं तो बहुत ही पहले आई स्टॉप्ड अप्रोचिंग वुमेन ब्रो. मेरे को तो आई वाज लाइक कि भाई नहीं ऐसा मत कर. नहीं मेरे साथ तो यही हो गया. नहीं सही में ब्रो, मतलब आई स्टॉप्ड Good only. मतलब अप्रोचिंग वुमेन आई स्टॉप्ड. आई थिंक या Good for the women. Thanks. कम ऑन मैन, आई एम सच अ केयरिंग गाय. Thanks for taking one for the team. Fortunately for me, I was an ugly teenager. ठीक है, तो स्टॉकिंग वाला मेरे साथ ज़्यादा केस नहीं हुआ. But my friends, I have seen like ये जो बाइक से फॉलो करने वाला है and all of that. It happens a lot in like smaller towns. It's a thing. Like this is how guys think you should approach like girls.
और it gets dangerous. It definitely gets dangerous to the point कि For अगर the environment also, no? So much petrol. That's true. But पता है these guys have like sunken cost fallacy कुछ होता है उनके दिमाग में कि अब इस लड़की पे इतना टाइम स्पेंड कर दिया ना तो हाँ कैसे नहीं बोलेगी साले तूने खुद से वॉलंटियर करके टाइम I think now when I think of it in my head, उनको पता है क्या दिक्कत है, मम्मी पापा ने कभी ना नहीं बोली थी ना किसी चीज के लिए, तो वो किसी से ना नहीं सुन सकते ब्रो, मुझे ऐसा लगता है। या तो ना ज्यादा ही बोल दिया हाँ. कि मे बी यू नो इन दिस मे बी वन प्लेस वेयर यू हैव Yeah, you yeah. assert control Yeah. in one place because your life is already so controlled. And I think these guys are the best example of toxic relationships also. वो उसी वही relationship वहाँ से toxicity these are the guys that end up in toxic Yeah. Yeah, because they're so entitled, right? They think कि मतलब मेरे को कुछ चीज डिनाई नहीं हुआ लाइफ में तो how can you deny me? जब मेरे को तो बहुत बचपन में denial I accepted कि bro I don't like everybody so everybody won't like me so I was like okay with it कि भाई मेरे को सारे लोग पसंद नहीं करेंगे तो ये चीज मैंने बहुत जल्दी सीख ली थी अपने लाइफ के अंदर and it kind of helped me You over are the the years. biggest people pleaser I know. I am yeah but then I know that a lot of people won't तो मेरे को अपना जैसे मैं कहीं पे घुसता हूँ ना तो मेरे को पता चल जाता है ये मेरे को करेगा ये पसंद करेगा ये पसंद करेगा ये पसंद करेगा तो मैं सिर्फ उन पे फोकस करता हूँ बाकियों को then I like both of them हाँ I also like him man thanks man wish I could say the same अरे यार I like him on most days, but कभी-कभी ये मेरे को अरे ब्रो आई hurt मिस करता है। विश्वास आजा बैठ जा ब्रो विश्वास ये गलत मैंने गलत कर लिया है ब्रो बट नहीं तू मेरे को ये बोलना है कि ये सब जो ये स्टॉकिंग वाली या ऐसे लड़कियों के पीछा करने वाली जो हरकतें हैं ना बॉलीवुड बहुत भाई इनकरेज करता है बॉलीवुड तो कभी Seriously. No, so one of my friends, okay, उसके पीछे this guy actually did slash his wrist. And अगर मैं रंजना उससे पहले देखती ना, I would have been like, what the fuck is this? And then I saw Ranjana and I'm like, ये तो reality है. ये तो होता ये है. पिक्चर कहाँ है ये तो सच्चाई है Exactly. पर शुरू से ही ऐसा ही दिखा रहे हैं कि मतलब you be horrible to girls and then eventually she's like हाँ बहुत मजा आया तूने जो पीछा किया और मेरे लाइफ का बर्बाद किया ना तूने अब तू मेरा पति बनेगा The thing is, मतलब जो मेरे साथ स्टॉकिंग हो रहा था पर मैं नहीं बता पाई क्योंकि मुझे पता था कुछ भी होता अभी भी there are few things I keep it to myself because I know if I tell my family to protect me they will tell me कि हम साथ में चलते हैं हम छोड़ देंगे हम कर देंगे now they can't stop me from doing things but they will be with me all the time so I don't want that and उस वक्त मैंने नहीं बताया था but it's because पता नहीं I just for some reason I couldn't tell and मुझे बहुत गुस्सा आता है उस बात पे कि क्यों नहीं बता पा रही मैं अगर मेरे भाई के साथ कुछ होता है वो तो मम्मी को आके बता देता है और कुछ भी नहीं होता उसके साथ मेरे साथ क्यों Why? मेरे को क्यों घर में रुक सकते No, that's the thing. अगर whatever बैड सीन है मतलब But that's with all of When us. you're- I think it's the same thing. We same. can't say अगर- this yeah, at home because थोड़ा बहुत freedom जो दिया है वो भी चला जाएगा. Yeah, it's like we are being policed for other that guys. whatever behaviors. happens to you you were Yeah, responsible for it exactly. Yeah. so that ये mentality है इंडिया में and also like they're scared now that I'm grown up मुझे पता है मेरी बहन बाहर जाती है so I tell her कि देख पंगे ले पर आसपास देख के पंगे ले ठीक है if you someone's saying something to you on the road and you want to fight back make sure there are people around and make sure हाँ. that the guy is not sitting in a Fortuner or हाँ Or just not a group of guys. Yeah, group of guys. You'll learn. You'll get the memo. Anushka, it's okay. You're learning. I moved to Delhi first thing I bought was a pepper spray क्योंकि वो पहले कुछ इन्वेस्टमेंट में से था मतलब मेरे घर पे चूल्हा भी नहीं था पेपर स्प्रे था मेरे पास No, and I've noticed this. Okay, whenever I go out somewhere, if I'm like in a narrow gully or it's dark or something, my hand is automatically there in the pepper spray. Late It's like night just cab में अगर unlocked and it's like there at go position. यार देखो ऐसा तो वो मैं भी triggered ऐसे है, हाँ. एक्चुअली करता हूँ मतलब आई हैव दिस स्विस नाइफ काइंड ऑफ अ थिंग इन माय बैग तो अगर मैं कभी जा रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि पूरा रास्ता तो दैट इज माय डिफेंस But the probability of No, you no, being yeah, mugged yeah, and yeah. us being assaulted is That- very skewed. yeah right? that is and also like if I am in a cab late night तो आई हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी कि मैं ड्राइवर सीट के जस्ट पीछे बैठती हूँ बिकॉज आई जनरली कैरी अ स्लिंग बैग और आई कैन कंट्रोल दैट पर्सन सो The nice strategy ये मैं अप्लाई करूंगी ब्रो मैंने कभी नहीं किया So I tie my hair. If I'm in a cab late night, I tie my hair because it can be pulled or stuff like that. So Fuck, man. yeah. So what so I do all is of these things- I pretend to be on call so Yeah. that they know that I'm with someone or something if they will do something someone will come या for me for them सपोज लेट नाइट अगर मैं किसी भी अपनी गर्लफ्रेंड को मतलब कहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ कैब में ना तो मैं ऐसे जब जाऊँगा ना आगे तो ऐसे करके मैं नंबर देखता हूँ
ठीक है, मैं बोलता हूँ कि लाइव लोकेशन शेयर कर दियो सो दैट द कैबी काइंड ऑफ नोज, मतलब दिस इज हाउ, मतलब हाँ नहीं, मैं आई ऑलवेज लुक एट द नंबर कि मतलब आई एम लाइक ही डिड दैट। तुम्हारे घर से उस दिन जा रही थी ना, तो ये और नीरज इंटिमिडेट कर रहे थे मेरे कैब। बट देन फिर मैं ये भी सोचता हूँ यार, व्हाट इफ द गाय इज एक्चुअली नाइस मैन, ही इज लाइक ब्रो यार मैं तो यार मैं काम कर रहा हूँ यार, तू ऐसे देख रहा है मेरे को I'm ब्रो। sure he's used to it and he knows by now. he knows All by now. cabbies Yeah, know yeah. that this is what everyone does. So You have to do no, you right, not all men, but enough number of men कि अब हम सब Yeah, से yeah. cautious enough. कि हमें कैसे पता चलेगा यार, सर पे थोड़ी लिखा होता है कि आदमी असॉल्टर है। नहीं, क्योंकि कई बार मैं रात में दारू पी के फुल मैं टन हूँ और मैंने कैब लिया है और वो बंदा मेरे को उठा रहा है, बिकॉज आई एम एक्चुअली नॉट स्कैर्ड, है ना। तो बट व्हेन यू आर सेइंग कि आई टाई माय हेयर, आई डू दिस स्लिंग बैक थिंगी, आई Call someone, pretend to be on a call or something. दिस इज एक्चुअली समथिंग वेरी, मतलब Welcome to our world. yeah. Even if I'm dead sleepy, Yeah. I can't sleep Yeah, because even I in the know if I will afternoon. sleep, Yeah. something can go wrong. Suबह को भी afternoon also you can't. Anytime for that matter. In the cab, no? Yeah, absolutely not. Dude, if the और कभी- Google Maps are showing कि straight जाना उसने left ले लिया, मेरी तो वहाँ फट जाती। मैंने कहा भैया क्यों बदला, मैं वहाँ से कम दिख रहा था, नहीं आप सीधा चलो, आपने क्यों बदला, मैं लड़ लेती हूँ उससे, क्यों मेरे को, because my alarm is like something is going to happen. It's just like that. I mean, it's hard to be a woman, guys. I know. Sorry, are we like downers? No, This is like. तू कहीं कैब में जा रहा है, तेरे को खतरा फील हुआ, you will make the cab like you can get down from the cab, right? Yeah. We can't even do that because Why? Because it's more unsafe outside the cab, right? I told you once, right? On this Noida, Delhi. Dude, I have this thing of laughing at weird situations, man. No, It but- doesn't mean that this is fucking hilarious. भाई अंदर मेरे को खतरा लग रहा है, बाहर तो मेरी पड़ जाएगी, अंदर ही बैठती है। What the fucking fuck? Night 10 PM के पास नोएडा और दिल्ली का जो रोड है जो निकलता है, सो पता नहीं फॉर सम रीजन दिस कैब ड्राइवर पता नहीं किस बात पे नाराज हो गया मुझसे। मैंने कहा भैया आप ये वाला रोड ले लो, इस वाले रोड से मत जाना। कहता नहीं मैम मैं नहीं जाऊँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। मैं वैसे ड्रेस नहीं पहनती हूँ यूजुअल डेज पे, बट फॉर सम रीजन दैट डे आई वोर अ ड्रेस, ठीक है। एंड दैट गाय उसने मुझे उस रात में बीच में छोड़ दिया, कहता मैम आप उतर जाओ। ब्रो मैंने कहा फक भाई अब मैं क्या करूँ। मैं उतर तो गई और आई वाज लाइक, और हर कोई, सारी गाड़ी, सारा स्कूटी, हर कोई 2 बार देख के मेरे को जा रहा है। एंड आई वाज लाइक मैं अपने आप को ऐसे वो कर रही हूँ कि प्लीज़ कोई कुछ तो करो यार, मैं क्या करूँ। ऑफ कोर्स आई बुक द कैब, बट द कैब वाज टेकिंग 11 मिनट्स, दैट वाज द लॉन्गेस्ट 11 मिनट्स ऑफ माई लाइफ। एंड देन छोड़ूंगी तो नहीं मैं उस बंदे को, उबर को कंप्लेन किया मैंने कहा इसने मुझे छोड़ा कैसे रात के बीचों बीच, मुझे कुछ लगा कौन रिस्पॉन्सिबल होता। अच्छा कनिष्क बता, रात के 12 बजे यू सी अ सिंगल गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड, हाँ तेरा क्या इंप्रेशन होगा? मैं नहीं जाऊँगा उसके पास ब्रो, मतलब मेरे को तो नहीं जनरली क्या लोचा लगे मेरे को, आई डोंट नो मैन। नहीं, if I see, जैसे I am really good with body language, if I see that she is feeling uncomfortable, I'll be like side थोड़ा जाके help. But you know the sad part is if you offer her help, she will decline. Exactly. एक बार पता क्या हुआ, एक बार मैं सीपी में घूम रहा हूँ, एक बंदा पता नहीं वो ए ब्लॉक या सी ब्लॉक के पास में था मैं, एक बंदे ने एक लड़की को झापड़ मारा खींच के। मैं तेरा दिमाग ठीक है? और लड़की मेरे को कह रही है आप कौन हो? Oh, you told me about I told you ना, वो मेरे को ही कह रही है। Yeah. मैंने बोला तेरा दिमाग ठीक है? कबीर सिंह in real life. Literally bro, सामने अतुल ने भी बताया था कि some dude was hitting his pregnant wife रोड साइड पे, ठीक है। तो अतुल बोला कि I just saw red, ठीक है, मेरे को पता नहीं, बॉडी ऑटो पायलट पे चली गई। he grabbed the person, उसको अलग हटाया and then he punched उसके मुंह पे, और उसके बाद औरत आके रोने लगी, छोड़ दीजिए मेरा आदमी है भाई, छोड़ दीजिए भाई साहब मेरा आदमी है, गलती हो गई इससे। ही इज लाइक, तब जाके मेरे को होश आया कि भैया आई एम हिटिंग दिस पर्सन। बट वो भी सिचुएशन डरावना है यार, यू गेटिंग इन्वॉल्व इन दैट बिकॉज यू डोंट नो द रिएक्शन। सो हाँ मतलब होते हैं यार कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं वेयर लाइक यू गेट यूज्ड टू लाइक गेटिंग हर्ट, दैट्स, और वो नॉर्मलाइज भी हो जाता है। और ये ज्यादा ना हमेशा ऐसा नहीं है कि वो बाहर, मतलब देयर आर टाइम्स व्हेन फैमिली मेंबर्स डू स्टफ। You know why that happens? Because it's a lot to do with your past traumas.
okay, when you're looking at like your parents not in an exactly loving relationship, you kind of normalize that behavior. You kind of see your family members kind of treating you badly, maybe comparing you to someone all the time, or maybe not complimenting you or whatever, and then you kind of project those traits in your relationship. defense mechanism type Yeah, if you're powerless at your home, you try to assert power, or if you do the exact opposite to balance it in your not just opposite. Sometimes you can do exactly that, because you don't really, as a child, you don't know if that's a good or a bad trait. You just imbibe it no matter what. Now, right? when she's saying this completely makes sense to me, because my first boyfriend, the first love of my life, I know. 6 years, 6 fucking years I wasted with this guy. And bro, it was bad. He had control over everything, and for some reason now when I look back, I was the one who gave him the control, okay? I couldn't take it back anytime. I gave him control because I was in love. और मैंने बोला हुआ है, मैं दिल फेक आशिक हुआ करती थी, ठीक ये है? daddy issues बोलते हैं इसको. I don't. That's how humans behave, यार. Basic human psychology है ये. Whatever's lacking in your life, you want to like overcompensate for it when you grow up. I just know. I think I was just obsessed with the idea of first love. He was my first love. I met him very young. I was in 8th standard or something, and I was like, he is the one. It's it. This is the one. बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. I was just obsessed with that, and this guy started controlling everything. He used to literally treat me like shit. कभी भी आएगा, कभी भी छोड़ देगा. He character shaming, body shaming, what not, everything, and it came to a point where was physical violence. And now I say it because I've learned from it. He slapped, I slapped, and it ended. After 6 years, it ended. And when it ended, I thought I'll feel good about it. But for the next 4 years, I was suffering. I was not okay. Losing him was not okay because I got so used to of that toxicity. Because I have read this line somewhere, toxic relationships gives you a high, you never get it. It's like a drug. And when you're low, it feels like you're dying. So I used, वो रोज होता था मेरे साथ, रोज. And I was in it for 6 years. And now when I look back, and now I am where I am, it took me 4 years, good 4 years to move on. And I know it's fucking stupid because there were a lot of reasons to move on. But I couldn't for some reason. I don't know what reason. Maybe it was just the idea in my head. And now I've moved on. And I'm in a very stable relationship. And मेरा बस एक ही, be it friendship, be it my relationship with my parents, my friends, or anything. I have boundaries in every relationship because उस वक्त कोई नहीं थे. That relationship taught me about boundaries. कुछ भी नहीं था. And I have so many boundaries. Like not so many. It's not negative. It's like एक boundary है. उसको कोई भी cross करेगा, मैं नहीं. वहाँ खत्म. मेरा बस एक मंत्र है, let live, let me live. मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी, don't get personal and don't disrespect me. बस और कुछ नहीं. उसके आगे मैं I'm good to go. So वो जो हार्ट ब्रेक वाला हमने पॉडकास्ट किया था उसमें भी I spoke about this relationship I had for 5 years which was like pretty intense, not in a good way. मतलब मेरे से पूछो ना तो being in a toxic relationship or being in a red flag वाला relationship is more like investing in Bitcoin. ठीक है. High return, high risk. और ऊपर नीचे जाता रहेगा बट अदरवाइज लाइक म्यूचुअल फंड की तरह है अभी मेरा जो रिलेशनशिप है अतुल के साथ, स्टेबल, वेरी नाइसली ग्रोइंग एंड एवरीथिंग. PPF. आई अंडरस्टैंड दैट. Nifty 50. जब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होते हो या बैड रिलेशनशिप्स, यू लूज योरसेल्फ एज अ पर्सन लाइक एवरी सेकेंड ऑफ द डे. व्हाटएवर आई यूज्ड टू डू, जबकि मैं कॉलेज में थी बहुत दूर, it was like influenced by that person. I was in relationship with. I told you ना, he was like 9 बजे वापस आ जाओ हॉस्टल, चाहे कितनी भी ये हो. मैं ना तो मतलब काम हो तुम्हें बाहर, you can't talk to any guys even though you are in a college जहाँ it's impossible not to talk to guys. Like तुम्हारा सर पूछ रहे हैं तुमने होमवर्क किया सर? Sorry, no. भैया, अरे बेटा तुमने होमवर्क किया? दे दो, मैं आपको नहीं दूंगी. आप अपनी बीवी को मैडम बुलाओ. मैडम आपको कहाँ छोड़ना है? औरत नहीं है भैया ऑटो चलाने. एंड ऑल्सो लाइक अगर तुमको टीम डिवाइड कर दिया टीचर्स ने टू डू अ प्रोजेक्ट, हाउ डू यू अवॉइड टॉकिंग टू गाइस? I remember if I'm online, I'm not talking to this guy. Straight up abuses, straight up abuses to whom you're talking to. You're this, you're that, and what not, bro. And today, I don't know if I feel I don't have self-confidence. It's वो जाता नहीं है. मैं कितना भी ट्राई करती हूँ. I've done therapy. I've been in therapy for 1 year. Thankfully now I know my triggers thanks to the therapy. But I'm still trying to overcome it because that never.
आई थिंक वो कभी जाता नहीं, वो सिस्टम में रहता है, हमेशा रहेगा कि what still annoys me the most is I trusted you so much with everything and you broke my heart like anything. You broke my spirit actually. I don't want to talk to you anymore. I don't want to engage with you anymore. I don't want to engage with any such guy anymore. And with me what happens is if I see similar things happening around me, मेरे को ट्रिगर हो जाता है, मेरे को गुस्सा आ जाता है. I feel like I'm like तू जेल के अंदर जाएगा, तूने किया कैसे? And now when I look back I'm like उस बंदे को जेल के अंदर होना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं किया? बट लाइक हम अभी ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, बट लाइक ऐसे रेड फ्लैग्स वाले रिलेशनशिप सिर्फ रोमांटिक नहीं होते. दे आर अ लॉट ऑफ लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, और जैसे समटाइम्स पीपल यू आर रिलेटेड टू कैन बी वेरी बैड टू यू. मेरी एक फ्रेंड है, वो एक बार रात में शी यूज टू गो बैक एट 9 घर, तो उसके एक दिन काम आ गया. 10:30 बजे शी रीच्ड होम and her चाचू started beating her. तू सेक्स करके आई है, ये हुए पता नहीं क्या क्या बोला, started beating her and she was looking at her dad, fucking save me, and her dad didn't say anything. Because it's a weird fucking space to be in, man. मतलब तुम काम करके आ रहे हो 1.5 घंटे लेट, and मतलब यू नो इंडियन फैमिलीज, एक तो ना पहले तो इंटरनेट पे आजकल बोलना लोगों को बहुत बुरा लग जाता है, बोले माँ बाप टॉक्सिक हो सकते हैं. ये तुम्हारे भगवान ही नहीं होते सबके माँ बाप, दे टॉक्सिक. लाइक दिस गाय यू टॉकिंग अबाउट, उसका जो बाप जो देख रहा था अपनी बेटी को पिटते हुए, ही इज अ टॉक्सिक पर्सन. लाइक पैट्रियार्कल फैमिली, कोई वैल्यू नहीं है यार, कोई एजेंसी नहीं है लड़की की. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट ऑफ ऑल address the fact that families can be toxic. Your parents can be they're toxic. human beings after all. They're infallible. They can be. स्टार्टिंग में बचपन में तो मेरे को भी लगता था कि घर पे सब कुछ एकदम परफेक्ट है, देयर आर सुपर हीरोज, बट देन ओवर अ पीरियड टाइम आई आल्सो रियलाइज कि नहीं यार, ये भी इंसान है जिनकी, अब ये भी बच्चे थे कभी किसी टाइम पे यार. हम अपने मम्मी पापा को कभी ऐसे सोचते नहीं कि बच्चे थे, है ना. सो दे आल्सो हैड देयर ओन लाइफ, देयर ओन ट्रॉमा, देयर ओन सीन्स, एंड ड्यू टू दैट नाउ दे आर रिएक्टिंग इन अ सर्टेन वे. और इसमें क्या गलत क्या सही, मतलब यार देख, हमारा तो अपब्रिंगिंग अलग हुआ है, हमारे फ्रेंड्स काफी आई थिंक लिबरल, सही वर्ड है क्या, क्या वर्ड, क्या व्हाट्स द वर्ड, emancipated. वही वो है. We've been raised with a lot of freedom of फ्रीडम, thought. हाँ फ्रीडम. और इंटरनेट के आने के बाद भी मतलब वी हैव एक्सेस टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ना. लेकिन उस टाइम पे उनका जो, जैसे मतलब मेरे पापा भाई कहाँ से, बिहार में किसी छोटे से गांव से ही केम हियर, तो उनका जिस तरीके थिंक है, हाँ 3 बिहार. Your dad is like so cool. बट हाँ वही उसके हिसाब से आई थिंक इज रियली कूल मैन. मतलब काफी ना, genuinely give him a lot of respect, but कभी कभी he says stuff something and I'm like, Mr. Poppy, this ain't done. Same bro, even Just because you're like, you came to this world like 50 years before me, doesn't make you right, man. Mr. Poppy, this is wrong. Like even my parents are super chill, okay? Like otherwise they're very cool, like you met them. Same, yeah. But sometimes I mean he does genuinely say things very problematic things also. But मेरे को ना लगता है यहाँ पे ना दो चीजें cool थे. Yeah, but it's just like you can't blame them. They don't know better. They were raised in a different time. It's लेकिन मेरे को तो लगता है कि कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है ना, तो यू शुड पकड़ द प्रॉब्लम देन एंड देयर. Yeah, the sooner you do it ना, ये मैंने बहुत लेट सीखा. The sooner you पकड़ the problem, no, it gets easier. क्योंकि then that person knows, the other person knows कि bro, this person is not okay with it. एक सेकंड वर्ल्ड वॉर की कविता मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, मैं जब थिएटर करता था, कि पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा. वो मेरे गली में आए, मैं चुप रहा. मेरे घर में घुस आए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब वो मेरे कमरे में आया तब मुझे बचाने वाला कोई नहीं बचा था. So it's like step and I mean fucking hell man. That is basically setting boundaries. So you were talking about मेरी mother-in-law and all. So the moment I got married, because I have had past relationships that are toxic, I knew I have to establish boundaries, what I'm okay with, what I'm not okay with. And at that point it was so nice. They were also trying to figure out कि कहाँ तक, what is she not okay with, कितना इसको freedom चाहिए. So they were very receptive of my boundaries कि हाँ ठीक है. ये सब तो जो तू कह रहा है ना कि जहाँ प्रॉब्लम हो वहीं बोलो. किसी भी कहीं भी कोई सीन हो ना, you need to pinpoint the problem there and there. The sooner you do it, and that's important in workplace as well. Fuck yes, man. Yeah. And this whole thing about toxic relationships, may the guy is like the aggressor
and all, and in any relationship, not just romantic ones, that the guy is the aggressor is a misnomer, is a misdirect, because anybody can be an aggressor. Like this, like, you know, despite gender, background, whatever. Because I had a female boss who was a textbook abuser. Like, yeah, so okay, let me tell you this. She told me to not wear a sanitary napkin because we want to write an article on free bleeding. The same thing about, like, you know, being young and you can't really say, like, you know, this is not okay. At that time, you're just like, I'm in a job or I'm in a relationship, I can't really say anything, you know. If I say something, things will not go, you know, the way I want them to. So I just was like, okay, this whatever. really Just fuck like, up, man. yeah, I know. That's kind of pissing me off, man. Yeah. For some fucking reason. बेसिकली इंडियन वर्क प्लेसेस का ये प्रॉब्लम है कि nobody talks about कि how bosses can create a toxic environment. मतलब अब लोग बात करते हैं बहुत नॉर्मल एक चीज मैं एग्जांपल देती हूँ. एवरीबडी हैज बीन शाउटेड एट बाय देयर बॉसेस. नहीं, सो आई हैव ऑलवेज एस्टैब्लिश्ड दैट बाउंड्री कि भाई जिस दिन मेरे पे चीखने का मन करे ना, फायर कर देना, फायर कर दे, चीख मत. But I also think that, see, like, you know, how you treat your subordinates also shows how you would be in a relationship. Yeah. Because, For sure. see, if you, it's like, it's very basic. It's both things, like how you treat humans. You want the best for them. You want them to grow. You want them to succeed. You're good. You treat them as equals. You treat them as, you know, somebody who you want to see, you know, do well in life. It's the same thing how you would be at your house, that you'd be at how in a relationship, you'd also be in your office. And that kind of reflects what kind of a person you are. It kind of trickles into It also how means you you're are a bad boss. If Exactly. you have to shout to like yeah, You're stupid, absolutely. bro. You Yeah. respect people. That's stupidity. Yeah, if you Or respect you- people at your workplace, you also respect people in your relationship as well. I remember this is lockdown time. Okay, my family was going through a rough phase, and my father was working with this new. It's not a new company, but not a great company, and a new boss took over, and this is some meeting going on जो मुझे सुनाई दे रहा था. And I was sitting beside my father. Of course, video call नहीं चल रहा था, and he said something because my father is from Bihar. Okay. And he doesn't have a great fluency in English. He mocked my father about that. And I muted the call then and there. I said, you are saying this or I am saying this. This is not where he is supposed to say this. I have seen this happening. Toxic culture मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ मेरे पापा को, because he is he's a service class man, okay. So ये होते हुए देखा मैंने बहुत बार. कितना स्ट्रेस में देखा मैंने अपने पापा को. And that was the first time he actually voiced his opinion, and he said it, sir, this is not acceptable, you are not supposed to say this. And that person did that in front of my father's junior, जो मेरे पापा के अंडर काम करते हैं. That's not cool, okay, you are not supposed to do that. And after that मेरे पापा ने पता है क्या बोला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, for the first time. अब मुझे डर नहीं लग रहा, जो होगा देखा जाएगा. पर्सनल चीज़ पे कैसे कमेंट कर सकते हो? अबे सही में प्रोफेशनल स्पेस में तो आई थिंक बहुत ही, जैसे मेरी बहन और भाई के ऑफिस में ना, जो उनके बॉस हैं ब्रो, जिस तरीके से वो मेरे को आके बताते हैं, मैं बोलता हूँ तुम सुन कैसे रहे हो यार, क्या बातें कर रहे हो भाई तुम. ये भी है ना कि मतलब बॉस की गाली तो खानी ही पड़ती है. नहीं खानी पड़ती यार. ऑल द पीपल हु आर लाइक एंटरिंग इनटू द वर्कफोर्स, आई वांट टू टेल यू ऑल दैट इट्स अप टू यू कि तुमको गाली खाना है या नहीं खाना है. बिकॉज बुलीज ओनली बुली जिनको बुली कर सकते हो. मेरे को आज भी ये लगता है कि अगर बॉस के साथ भी तुम्हारे को लोचा हो रहा ना, then and there pinpoint bro. I think that will not happen. But the thing is, not everybody has the power to do that, because some people are genuinely like they have the मजबूरी होती है यार लोगों के लाइफ में. Not everybody has the power to do that. But I mean, as far as possible, if you can prevent it. यार नहीं, मतलब मजबूरी ठीक है, बट मेरे को एक्चुअली लगता है कि अगर सपोज मजबूरी ठीक है, लेकिन अगर आज मैंने ये करने दिया ना, ये कल भी करेगा, परसों भी करेगा, तरसों भी करेगा, और सिर्फ ये मजबूरी के चक्कर में ना मैं यही सेम जॉब कहीं और जाके किसी ठीक एनवायरनमेंट में भी कर सकता हूँ. मैं इवेंट पे गया था, देयर वाज दिस इवेंट मैनेजर हु वाज लाइक, आई यूज्ड टू होस्ट इवेंट्स, आपको पता ना. देयर वाज दिस इवेंट मैनेजर हु वाज लाइक रियली डिसरिस्पेक्टिंग मी. तेरे को इंग्लिश नहीं आती, तेरे को ये नहीं आता होता ना. मैंने सुन मेरी बात, ये पकड़ा अपना माइक जो मेरे को 3000 दे रहा है दिन के, एंड आई फकिंग वॉकड ऑफ. और 3000 उस टाइम पे मेरे लिए बहुत थे ब्रो. ठीक है भाई, नहीं कमाएंगे 3000, कोई दिक्कत नहीं है ना. मतलब लाइक दिस इज नॉट डन ब्रो. शी इज राइट. यू हैव टू एक्सेप्ट योर प्रिविलेज. कि तेरे को पता था कि रेंट पे नहीं करना है मुझे, खाना घर पे पापा के पैसे से बन रहा है. ये सो this नॉट एवरी. अब जिसका पूरा, अब उसके पापा पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है. That's why he can't afford to like lose that job completely, right? So वो होता है बहुत बार. लेकिन
You don't have to fight back यार. You can be like मैंने कैसे किया, मेरा पहला जॉब वही था, रेंट मैं खुद पे करती थी, खाने का पैसा. It was risky. This woman, every argument will turn into like shouty argument. She was not my boss, but she was my senior. So मैंने उसको एक दिन यही बोला कि I don't want to have this conversation when you're this emotional. Why don't you have a glass of water and then we can continue. उसका although उसको अंदर से बहुत गुस्सा आया, but because I was not disrespectful, she had to reset herself. नहीं मैं I can't do this. पता है, if you're being passive aggressive with me, no, I have to step it up, man. I do this. मतलब this is my thing. Step it up कर रहे हैं. नहीं मेरे साथ एक्चुअली वो सीन ना, okay. All my friends are toxic. All my friends are toxic. तू भी रख दे, सर पे रख दे. नहीं यार, it's fine. दबा दे, पाँव. 500 दे दो, 3000 दे दो. What you lost in that time? You were telling me na someone asked for a foot pic. Somebody asked for my foot pics and underarm pics, like different DMs. I just remembered because I'm halfway through my glass. So and he said sweaty armpits. To be specific. Sorry. Sweaty armpits से disgust हो जाती है bro, sorry. And he said sweet smelling sweat. ए बाबू, मैं जा रहा हूँ भाई, मेरे से नहीं होगा ये. मैं मेरा माइक लो. Bro, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को उल्टी आ रही कसम से. ऐसी उल्टी आ रही है, okay? I was supposed to announce this in the end. You're pregnant. She's pregnant. You're pregnant. She was supposed to. I was supposed to announce it. I took your limelight. I'll do it again. I'll not. So I want to announce Pregnant she something. is. She's pregnant. मेरे को एक announcement करना She's है. pregnant. Bro, मेरे को भी एक बार, मेरे को somebody sent me a DM and she wrote a letter from her blood. Maybe that was period. I don't know. Free Maybe bleeding. period. Yeah. Yeah. अपने आप को ज़्यादा भाव मत It's दे. not difficult for women to write letters in blood, yeah. Yeah, you should know. She must be using a menstrual cup or something. It's easy access. I don't know how to एक do that. tampon लेके Oh my god. You can use it like a crayon ना. Bro, what the f- मैं पता है क्या करता हूँ, मेरे को कोई भी डीएम आता है ना, अगर मेरी सटक जाती है डीएम पे, मैं मिशन पे निकलता हूँ ब्रो. मैं उस बंदे को स्टॉक करता हूँ, उस इंसान को मैं स्टॉक करता हूँ, फेसबुक पे जाके स्टॉक करता हूँ, उसके दोस्तों को ढूंढता हूँ, देखता हूँ उसका किसी का, कोई उसकी बहन है, कोई उसका भाई है, एंड देन आई स्क्रीनशॉट एंड आई सेंड these messages to that person. I'm like, this is the person who's sending me. I go on a mission, bro. एक बार मैंने 2:30 बजे रात में ना, एक बंदे ने मेरे को मैसेज किया, कॉल किया, पता नहीं, मैं क्लब हाउस पे मैं एक रूम होस्ट कर रहा था, वो एप्लीकेशन है ना जिसमें, उसने बोला आप किसी को बोलने नहीं देता. मैंने, मेरी बात सुन, ये मेरा कमरा, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में रूल्स लिख चुका हूँ, तू आ रहा है. वो बंदे ने मेरे को 1-1.5 महीने पहले अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी पर इन्वाइट किया कि कनिष्क भाई आप आओगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा. एंड देन दिस गाय इज लाइक, तुम जैसे लोग हमारी वजह से बनते हैं, ये होते हैं. मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने सुना तोड़ दूंगा. मैंने उसको फ़ोन 2:30 बजे रात में मैंने उसको फ़ोन किया कि उसने उस इनवाइट में नंबर दिया हुआ था. मतलब दिस इज हाउ आई रिप्लाई ब्रो, इफ आई एम फक्ड ब्रो आई विल फक योर लाइफ. No, but like that you can do only in case if they are actually using their main profile. Yeah, man. क्योंकि all these creepy assholes, no, we can fuck their case if they use their own, and I have done that. अपने प्रोफाइल से आके जो बोला, और बहुत बार तो क्या होता है कि अपना मेन प्रोफाइल ना भी हो तो भी तरीके हैं पकड़ने के कि बंदा क्या है, बट थोड़ा एफर्ट लगता है. पर अगर कोई अपने प्रोफाइल से आके उसको तो डिफेम कर दो इजीली, बिकॉज यार एम्प्लॉयर वगैरह सबका नाम मिल जाता है लोगों का. इंटरनेट इज अ वेरी ओपन प्लेस, बट दीज क्रीप्स एक्चुअली नो व्हाट हाउ टू, जो ऐसे सीरियल वो नकली प्रोफाइल्स बनाते सारे. हाँ, तो नहीं हो पाता भाई. सोचा ही नहीं. नहीं इस टाइम पे तो नाउ तो आई जस्ट क्योंकि स्टार्टेड मैं भी डिलीटिंग. शुरू में ऐसा करती थी. देन आई नोटिस किसी somebody commented on my कि you तू कितना मेकअप लगाती हो, इस तरह से कुछ बोला, उसको रिप्लाई किया ना मैंने. आई नोटिस उसके बाद मेकअप के बारे में 4-5 और क्रीप्स आर कमेंटिंग. सो बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर वैलिडेशन. बहुत टाइम है मुझे लग रहा है. अरे भाई ये क्या ही वैलिडेशन है ब्रो कि मतलब तुमने इंटरनेट पे किसी को देखा, तुमको उससे गाली खानी है. No, but any kind of attention is positive reinforcement for them, right? They're like basically dogs. Dogs को तुम डांटो या कैसे भी करो, attention है उनको चाहिए. Basically, either way it's attention for them.
but So it's best to just ignore them and just hope that they just kind of नहीं now तो I have started like deleting. Yeah. मेरे को एक भी दिख जाए ना कि ये साले तू बस delete, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ bro. I just delete it. Fuck it. imagine किसी का existence इतना छोटा है, your existence has value for you, Yeah, right? Your family loves you, you made something out of yourself, but किसी का existence इतना useless है कि जो internet पे टट्टी validation है ना, वो भी मतलब गाली सुन के भी उनको मजा आ रहा है. मजा आ रहा है, ये वही तो मैं कह रहा हूँ bro. I have a topic, positive. Positive, yes, go ahead. हाँ. तो I know these days you are on dating I'm apps not on again. dating apps now. He has I found the was. one. Okay, I brand found new someone, information. But app dating. आप I dating was कर on रहे dating, but हैं. now I found someone, you know. पर एक बात बता मेरे को, तू जो था अभी उधर रेड फ्लैग्स क्या थे तेरे लिए? या मेरे लिए रेड फ्लैग्स क्या थे? पहली बात तो मेरा मैचेस बहुत कम आया. नहीं, लड़कों के हिसाब से मेरा सही था ब्रो. 50-60 आया ब्रो हिंज पे. 50-60 कम नहीं है दोस्त, बहुत है. काफी बहुत है, है हाँ, actually. तेरा क्या है? अगर मैं एक्चुअली ज़्यादा नहीं किया है ऑनलाइन डेटिंग, बट जब भी किया है, अगर मैंने किसी लड़की की फोटो देखी जिसमें गाड़ी डाली हुई है उसकी और जिसमें बहुत मतलब बेसिकली शोइंग ऑफ हिज मनी एंड देयर इज नथिंग रिटन, आई एम लाइक यू फक ऑफ, रिजेक्ट. एंड ऑनेस्टली देयर आर गाइज जो उनको लगता है चलो तुम कैजुअल के लिए भी हो वहाँ पे, आई एम ऑल इन फॉर दैट, बट थोड़ा तो एफर्ट लगाओ, एटलीस्ट एक लाइन का बायो लिख दो, कुछ तो लिखो. भाई तेरे को पता बायो में लड़कों की बायो मैंने देखी है भाई, बड़ी खतरनाक होती है. कह रहा केक मॉडलर भाई. उसमें दिखा दे. दिखाना नहीं है मुझे. एक में लिखा होता कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर बेबी, आई एम नॉट लुकिंग फॉर बे बिकॉज़ माय मॉम विल फाइंड माय बे ऑन अ डेटिंग प्रोफाइल. तो यहाँ क्यों है? भाई तो भाई तू यहाँ क्यों है? Red flag. Red flag. इसको जूता फ्लैग है ब्रो ये. लाखों जाएंगे, मेरी वाली तो मम्मी लाएंगे. मम्मी ये यही तो लाइन थी. लाखों जाएंगी मम्मी, मेरी वाली मम्मी लाएंगी. यार तू डेटिंग प्रोफाइल पे तुझे सापियोसेक्सुअल्स नहीं मिले उधर? सापियोसेक्सुअल्स यार भाई हाँ भाई ये हाँ मतलब रेड फ्लैग मैं बताता हूँ. Wanderlust, वंडरलस्ट, सापियोसेक्सुअल, कॉफी लवर, मतलब और फॉरेन फोटो फॉरेन फॉरेन Doggy फोटो डालती है इसलिए राइट स्वाइप पे उनको पता है यहाँ तो. Yeah, if I was on a dating app and I saw a doggy photo, I would totally For sure. like. भाई मेरी हिंदी प्रोफाइल बड़ी स्ट्रांग थी ब्रो, बड़ी मस्त थी. अभी जज कर लेते हैं. मैंने डिलीट कर दिया. अभी 3 लड़कियां बैठी है जज करने के लिए. नहीं मेरा एक्चुअली बहुत सही था. नो बट तेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अतुल और जब मैं रिलेशनशिप में नहीं थे, वी वर काइंड ऑफ लाइक ऑन एंड ऑफ. बहुत हमारे भी रिलेशनशिप्स के काफी अप डाउन रहे हैं. तो एक बार बीच में वी स्टॉप टॉकिंग, ठीक है, बिकॉज आई वॉजंट सीरियस, ही वॉजंट सीरियस, बट देन वी डेवलप फीलिंग्स फॉर ईच अदर एंड वी वर नॉट लाइक कहाँ जा रहा है. सो वी वर लाइक लेट्स टेक सम टाइम. उस कुत्ते ने जितने DSLR से मैंने उसकी अच्छी फोटोज लिए. अतुल भाई यू आर द मैन. आपका डिवोर्स कब हो रहा है? और मैंने NIFT से पढ़ा है, तो हमें ना फोटोग्राफी कोर्सेज दिए थे एंड इट्स नॉट बैड. आकाश इज लाइक मैंने जो पढ़ाई करी है अतुल मैं तुम पे निकालना चाहती हूँ. इज लाइक ओके मैन एंड ब्रेकअप के बाद ये मैं कहीं और निकालना चाहता हूँ डेटिंग. और पूरी बात सुनो, उसको इतने मैचेस आ रहे थे कि उसके रूममेट्स परेशान हो गए थे कि भाई फोन साइलेंट कर दे भाई, बिकॉज ही इज लाइक. सो यार मैं तब से ना लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कर रही हूँ. और ये कभी ऐसा होगा तू चैट पे है, ठीक है, और किसी लड़की ने कुछ ऐसा डेंजरस बोला कि तू बोला भाई आई एम आउट ऑफ हियर. मेरे 3 क्राइटेरिया होता है बहुत सिंपल, कि तुम्हारा कोई साइको एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारा कोई बॉडी बिल्डर भाई नहीं होना चाहिए, और तुम्हारा कोई पॉलिटिशियन बाप नहीं होना चाहिए, ठीक है. आई एम लाइक रियली स्कैर्ड ऑफ. Shallow man. नहीं इट इज वेरी वियर्ड आई नो. यार. इट इज बट इट्स एक्चुअली अ थिंग ब्रो. मैं ये नहीं चाहता कि मैं जहाँ के पिज्जा हट में देख रहा हूँ कि बेबी यू आर सो ब्यूटीफुल एंड कट टू मैं अगले सेकंड स्कॉर्पियो की डिक्की में हूँ ब्रो. व्हाट द फक मैन. मारुति वैन. बता चैट का बता. एक बंदी थी उससे बात हो रही थी ब्रो, वो हिंज पे बात हो रही थी, ठीक है, उस ऐसी बात हो रही थी. फिर उसने बोला कि कहाँ मिले यार, कहीं मिल सकता है. उसने मूवी देखते हैं, मैंने देख सकता है मूवी, आई लव मूवीज. उसने सीपी, मैंने बोला सीपी चलते हैं. उसने सीपी नहीं हो सकता. मैंने क्यों? क्योंकि नहीं कहीं और चलते हैं ना. सीपी क्यों नहीं, सीपी तो बढ़िया जगह है. उसने बोला कि मेरे पापा के जानने वाले हैं. मैंने कौन है तेरे पापा? उसने बोला कि नहीं आई एम फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड. मैंने लगा ब्रो and then done. I didn't text back. But I understand that. Fucked off, bro. But it's not necessary कि वही हो. जरूरी नहीं कि तुम्हारे बाप के सिंस की वजह से किसी को जज करो. बट पावर डायनेमिक होता है ना. They on that space only कि वो उनका पावर तुमसे बहुत ज्यादा है. Just by their social standing, right? हाँ वो भी यार. हाँ मतलब it will never be an equal relationship. Yeah, it will never be. It will never be. That's true. Even if she is totally into me, वो नहीं हो पाएगा. समझ रहे हो? Dating. Like dating app में मेरे साथ ये सीन है कि अगर मैं if I'm being nice
to you and I kind of don't reply to you because इस time पे ना I am like bro I'll only reply to you when I have time. ठीक है? I have given importance to myself. This is how I kind of function. It might be weird, but that's how No, it's I not function. weird at all. But it's okay. It's mutual respect for each other, each other's time. मतलब वही ना मैंने कुछ लोगों में इतना इन्वेस्ट कर दिया and they didn't reply. मतलब उन्होंने वो reciprocate नहीं किया. So I was like bro, अब I will give importance to myself. That is how I function. So वो boundary होती है ना. Now you're not okay with like Encroaching someone's space. Yeah. That's a green flag. If you find someone who understands that, it's fine. जिसको नहीं समझ में आता भैया, It's okay. हाँ भाई. ये हो रहा था हमारे भी रिलेशनशिप में like so फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा और अतुल का रिलेशनशिप आई कंसिडर वेरी हेल्दी. अगर मैं बहुत डिल्यूजनल हूँ अभी कि मुझे नहीं पर समझ में आ रहा इट्स अनहेल्दी देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. टू लेट नाउ. But basically initially I will take care of the baby. thanks. Just tell me, give me the signal. मान ले जाऊँगा उसको. एडजस्टमेंट पीरियड होता है ना किसी भी रिलेशनशिप का, तो वहाँ थोड़े कॉल्स ज़्यादा इधर उधर हो रहे थे. मतलब अतुल की तरफ से ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे व्हेन आई वाज एट ऑफिस एंड आई हैड टू टेल हिम कि ब्रो I can't talk to you when I'm at work. I'll come back home and we can meet, we can talk for hours, but I need that space. And he immediately understood. But then that's the thing, right? You can, if you're in a healthy relationship, you can communicate और ये वही that. वाली बात And you थी कि can tell that. Yeah. Like, I mean, I had a very similar conversation with Krishanu a while ago that, bro, देखो हर बार नहीं होता है conversation, ठीक है? And then he understood. And that's the difference between a good relationship and a bad one, right? That when you communicate something, they're like, oh, okay, we get it. I understand. I'll give you your space. I respect your boundary. Exactly, like that is. It's, और coming from a toxic relationship या traumatic past जो relationship का होता है, मेरे को फ्लैशबैक आने लगते थे पहले. अब तो लाइक जब ऐसा कुछ होता था ना जो उस रिलेशनशिप अब तो नहीं होता होगा. अब नहीं होता होगा बिकॉज अब आई नो व्हाट आई डोंट वांट. ठीक है. सो उस टाइम जब बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे अतुल का वाज लाइक ये भाई सही है कब है कब बिल्कुल ही पगला रहे हो. देन वो मैंने उसको बोला वो समझ गया व्हिच वुडंट हैव हैपेंड उस रिलेशनशिप में. ब्रो मैंने एक घटिया बॉयफ्रेंड के बारे में बात किया था. मुझे अपने अच्छे बॉयफ्रेंड के बारे में बात करना है. बता दे. That's my current boyfriend. That's my current boyfriend. When I started dating, I actually did not know the rights and the wrongs. And honestly, I will be honest about it. मैं बहुत ज़्यादा फेक होती थी अपने दूसरे बॉयफ्रेंड्स के साथ बिकॉज मुझे लगता था अगर मैं अपना 100% नहीं होंगी ये मेरे को छोड़ चला जाएगा. He wouldn't be able to handle it. But with this person, I am my true self. मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को हंसना होता है, मुझे जो मन में आता है मैं करती हूँ. And this sweet soul, he takes it. He's like, हाँ bro, ये अब ऐसी है, मैं क्या करूँ? And his basically love language is physical touch. अब मैं long distance में हूँ, अब कैसे होगा वो? फोन के अंदर से हाथ. नहीं. So, bro, if he is roasting me a lot, he roasts me so much. स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना, मैं पढ़ना चाहता हूँ. कॉल पे करता है bro, इतना रोस्ट करता है ना वो मेरे को. मेरे ख्याल से मेरे को कोई इतना रोस्ट नहीं करता और मेरे ख्याल से मैं किसी का इतना लेती भी नहीं हूँ. But the thing is that if that doesn't encroach on your space, that is amazing. It's a nice thing, no? It's Yeah, like a great. because see, good relationships are where you laugh together. Yeah. Where you're not laughing at each other's Being at, expense, but you're laughing with each other, at each other, and it's comfortable. It's a good place to be starting in. this relationship, I set my boundaries straight. मैंने बोला था ये नहीं होगा कभी भी. ये तूने किया तो सीन होगा और मैं जाऊंगी. ठीक है. तो till now, as of now, जितना मुझे याद है ऐसा कुछ नहीं हुआ है. ठीक है. And बहुत लोग बोलते हैं कि long distance नहीं चलता है. ठीक है. Yeah, that's bullshit. I also made another point that you're supposed to meet each other at least once in 6 months. I meet him every 6 months. Listen, so long distance. I had a long distance relationship on and off with Krishanu. Who's Krishanu? And Who's Krishanu, Arushi? my husband. कई लोगों को पता है आपको. मैं बताऊं कई लोगों को आप ना 14-15 साल के लगते हो गए. ठीक है. उनको बता दो that you're married man. So okay, for context, I've been dating. I dated for 10 years and then we got married, and I've been married for 4 years. So it's a total period of 14 years in total. And in between it's been a long distance as well, and we never thought of it as something that मतलब ये ना एक तो ये बहुत ही pop culture phenomenon है. ठीक है कि long distance नहीं चलता है and we will cheat if we are in long distance. That's bullshit.
But it's easier to because cheat. it is easier, but but the thing is, we never Don't thought boast about that. We never thought about that. Yeah. We just like, हाँ ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. Let's see where it goes, right? And then that's just the beauty of it, that we grew up together. We kind of handled long distance together. We laughed at each other's expense together and laughed at each other with each other together, and we grew up. We basically, and this whole idea of, you know, soulmate. I read about it and I totally believe Yeah, it. and this whole idea Kya of hai so this whole idea of soulmate, okay, that I think I discussed this with you, that Acha, soulmates aren't found. I think, like, what we believe is that they're made. And I think that me and my husband really believe that we kind of made each other's soulmates instead of found each other, because we kind of gave each other the space to grow and become, like, you know, our best selves over time, rather than, you know, कि just एक बार मिले, sparks fly हो गया, soulmate मिल गया, wow, the one. ऐसा नहीं होता. I mean, at least not in everyone's case. It doesn't happen like that. That's not okay. That's like a very How I Met Your Mother, Ted Mosby kind of thing. I feel like I kind of identify more with Lily and Marshall in our I like Ted Bundy. Sorry bro. वेरी राइट, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, अतुल का मेरा बहुत ऑन ऑफ भी होता था इनिशियली, एंड देन वी डिसाइडेड टू गिव ईच अदर स्पेस वेरी म्यूचुअली डिस्कशन से, और वैसे करते करते इट रीच टू अ पॉइंट वेयर वी कुड लर्न एंड अनलर्न थिंग्स, कि मैं क्या कर रही हूँ जो दूसरे के लिए ओके नहीं है, और दूसरे के लिए क्या किसी के लिए भी ओके नहीं होगा वो, एंड ही डिड द सेम थिंग. सो शी इज़ वेरी राइट इन द सेंस कि ऐसे स्पार्क फ्लाई सोलमेट ऐसा नहीं होता. You guys learn to live with each other, and then you grow मेरा with तो each spark other. का face You चल रहा है bro. learn. Fuck off man. What the No, hell? but the thing is Come on that- now. You know, but It's a possibility. But One in a billion. slowly, you will learn things about each other. You learn to accept things about Gin and each tonic other. दे दिया हमने इसके You साथ. you will learn about नहीं, each हाँ, other. kind of, yeah. You'll grow together. You know, you learn more things about what they like, what they don't like, what they're like in bed, what they're like otherwise, how they, like, you know, accept or don't accept a certain situation and all, and you'll kind of grow, you'll kind of learn as it comes, like go with the flow kinds. And if that kind of works for you, that's great. If you live through that, if you're okay with that, and you're, like, you know, finally Okay. Good. Continue. yeah, you're good with that. नहीं ये सही है. मेरे को एक Then- क्वेश्चन पूछना तुम तीनों हाँ. से. What do you think about compromises in a relationship? Do we need to compromise? मतलब do actually on a very serious note, ये नहीं कि नहीं ठीक है we do some things, they do something, नहीं, Genuinely. serious बता रही हूँ. Yeah, They- Serious चाहिए मेरे को. You have enough. You should, first of all, to be in a relationship, you should have enough brain to understand what's a good compromise and what's Yeah, a bad absolutely. Makes compromise. sense. Yeah. ठीक है. So some things are not okay. Him telling me that I can't wear a certain thing, and Yeah, then okay. I start wearing something else, that will be a compromise, right? But that's not a good compromise. Yeah. But आकांक्षा जी, हाँ, आपके दिमाग को स्ट्रॉ डाल के चूसना चाहता हूँ मैं. है ना. Go ahead. हाँ. अब ये बताती हूँ गुड कॉम्प्रोमाइज क्या बताती हूँ, कि ही टेल्स मी दैट देखो, आई नो यू डोंट लाइक टॉकिंग ऑन द फोन, बट माई पेरेंट्स लव टॉकिंग ऑन द फोन, तो कैन यू टेक आउट हाफ एन आवर टू टॉक टू देम, एंड आई डू दैट. दैट्स अ गुड मेरा कॉम्प्रोमाइज. मन कर मैं अतुल को स्मूच मार दूं. It's such a good compromise. Yeah. I'm willing to compromise. So because I don't even talk to my mother a lot on the phone, like हाल चाल लेते हैं, then we hang up, but I know his family has like long video calls and everything. अच्छा. So उसकी माँ को बहुत अच्छा लगता है when I talk to her for a while. I love. So that's a good compromise, right? It's not always about me. पर बुरा भी होता है. अब तेरे ये में कोई लड़की बोले कि भाई तू मुझे ड्राइव करके ले जाएगा हमेशा, जहाँ ऑफिस से लाएगा ऑफिस छोड़ेगा, और तू कर बैड मैं कॉम्प्रोमाइज. तो निकल लिया भाई इसमें. मैं ना कर. मैं ना कर. मैं शोहर हूँ, शोफर नहीं. नहीं ब्रो, मैं ये सब तो ब्रो, ये आपने पूछा ना रेड फ्लैग्स, ये मेरे रेड फ्लैग्स हैं. If you like, you don't love me, you won't do this for me. Yeah. Yeah, of course, yes. I I won't do mean, it. take a Fuck it. cab. There's Uber. मैं अपने घर पे ब्रो, तू क्या बात कर रही है? कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ किसी ग्रोन अप के साथ रिलेशनशिप, किसी बच्चे के साथ. बच्चे का थोड़ी ब्रो, क्या बात No, हो रही but है? I'll tell you what. So, like in our household, we have a very gender neutral household. Okay, so me and Krishanu, we don't have like set things to do. Okay, so Krishanu is really good at making food. He's a very good cook. Okay, and तो I पनीर कब suck. बना रहे हैं वो? हाँ,
I'm self-inviting. Yeah, okay, sure. तेरे को खिलाए भी अच्छी. मैंने कहा हाँ, तो so he's a very good cook, okay, and I am very good with like ऐसे handy work, okay, मैं screwdriver, hammer सब कुछ आराम से चला लूँगी. So that is yeah, so that is our thing. We don't have any set gender boundaries in our house, which is our thing, right? We don't have to like. We don't have a thing कि this is a wife's duty and this is a husband's duty, so we have to do that. We don't have gender that. norms नहीं है. We don't have that at all. And you know, अगर if a plumber comes to our house, it's either of us can handle him यार. We don't have to be like okay, husband has to be here to talk to him, or you know, जो गाड़ी साफ करने वाला हो वो husband has to pay him or nothing. Either of us can do that. So we don't have any like set kind of you know watertight rules in our house, and that's kind of how you make a relationship you know good. Like you don't like have a boundary कि हाँ तुम ये करोगे ये तुम्हारा जॉब है ये तुम्हारा जॉब है. हाँ, यार मुझे लगता है ये तो बहुत नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए. फ्लिप साइड बताती हूँ इसका कि me Atul and I adhere to our gender roles not because कि हम ऐसा expect करते हैं क्योंकि we are good at it. Like I am good at cooking. उसको नहीं आती तो उससे सफाई कराती हूँ मैं although पर अगर I do not बहुत अच्छा खाना बनाती है यार. That's the thing. That's the problem with you. Fuck you. You make really good आप पनीर पे कब बुला रही हैं? Very है बिरयानी. तुझे खिलाया नहीं है मैंने. So Krishanu and Pushpa's बिरयानी. तुझे मेरे पे भी हाँ बोल रही है. नहीं. Krishanu और पुष्पा का बिरयानी जो है, oh my god, fuck. They're like almost equally comparable. They're amazing. But yeah, what you were saying. So I was saying that only कि ऐसा और and I don't like talking to plumbers और electricians जब आते हैं ठीक है तो वो मैं बोलती हूँ मैं कमरे में जा रही हूँ लैपटॉप लेके काम सही करा देना ठीक है बट अब ऐसा नहीं कि मैं उस पे कहूँ कि साले हर बार मैं ही खाना बनाऊँ. What is this adherence to gender role? But I realize I'm doing it because उसको नहीं वो he'll suck at it, he tries. जैसे मैं ना I can't fucking do मेरे को ना वो काम पसंद नहीं है जहाँ पे मेरा दिमाग ना स्टिमुलेट नहीं हो रहा है. आप समझ रहे हो जहाँ पे अगर झाड़ू पोछा बर्तन खाना आई कैन नॉट डू दैट. जहाँ पे मेरा दिमाग स्टिमुलेट नहीं हो रहा ना आई वोंट डू इट. I totally get it. I I understand. Like I can understand organizing because I have to use my brain to know कि यहाँ से यहाँ दिमाग में कहाँ डालना है किस compartment में डालना है. That is still okay. But cooking I cannot. I don't understand it. I just do not. नहीं कुकिंग में एक्चुअली बहुत वो जाता I है. know but I can't do it. I just but I theory kind of सब आती है. Theory सब आती है. प्रैक्टिकल बोरिंग है. नहीं होता मेरे से. मतलब यार लाइक ऑनेस्टली मैं बताती हूँ मेरा इनिशियली जो बचपन का था वो इतना फक्ड अप था कि अभी जो भी छोटी छोटी चीज़ होती है मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बोला कि मुझे कॉल नहीं करेगा 1 घंटे तक मुझे मैसेज नहीं आना चाहिए 1.5-2 घंटे तक कोई मैसेज नहीं आएगा. आई टेल हिम लुक आई एम टेकिंग अ डे ऑफ ब्रेक मुझे नहीं चाहिए कोई नहीं तो नहीं होगा मैं करती हूँ वो मैं इट्स आई नीड माई स्पेस एंड द फैक्ट दैट ही रिस्पेक्ट्स दैट आई लव इट. एंड द थिंग इज नोबडी इन आवर रिलेशनशिप वो कोई उसका भी बाउंड्री उसने कभी बोला नहीं है अपफ्रंट बट you kind of आई जस्ट गेट इट लाइक इट्स अ वियर्ड थिंग व्हिच आई फाइंड मैं तो उसको मुंह बोलती हूँ बहुत ही उसको It's kind of hard. I know your boundaries. You know my boundaries, motherfucker. Let's have sex. Yeah. no I tell him honestly not encroaching space is tight. It's awesome. for like मैं बताती हूँ there are times जब मैं I'm not very okay with like hanging out with a big group. ठीक है मेरे को नहीं आता मेरे को बात नहीं करने आती है bro ठीक है. So there are times when I say something very problematic and उसके दोस्तों के बीच में होता है because मेरे तो बहुत ही कम दोस्त है ठीक है. इसका I know bro. She stays tough. बीच में ऐसा आएगी और कुछ बोल देगी और जितने लोग हैं ना सबकी but same here bro. I'm also your friend. And then everybody looks at my boyfriend and he's बेचारा कुछ नहीं बोलता. He's like bro उसका ये मतलब नहीं था यार वो बस मतलब वो actually नहीं उसको for some reason he knows where I'm coming from and honestly it's been like little over a year now but for some reason he knows it कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ ठीक है. तो वो डिफेंड करता है वो मेरे लिए करता है. मैं क्या करती हूँ मेरे को एकदम नहीं पसंद है बड़े ग्रुप में जाना एकदम. फॉर मी इट्स लाइक मेरी एनर्जी कोई चूस रहा है ठीक है. एंड उसका वो थिंग है उसके बहुत सारे दोस्त हैं. हम लाइक चल यार चल लेती हूँ. कहता डू यू वांट टू गो विद मी. अब मैं मना नहीं कर पाती हूँ ब्रो बिकॉज एट टाइम्स आई से नो बिकॉज आई एम लाइक ब्रो आई एम टायर्ड आई जस्ट कांट. बट
वो इतने प्यार से पूछते हैं, I'm like, मैं अगर बड़े ग्रुप में जा रहा हूँ ना और उसको पसंद नहीं है, मैं उसके साथ रहूंगा। बड़े ग्रुप में रहूंगा लेकिन उसके साथ रहूंगा। so I think little things जैसे ये मेरे लिए मैंने जो भी बोला गलत बोल दिया, but he is always sort of there with me. Never, probably मैंने कुछ बहुत गलत बोला होगा जो कि मैंने बोला है, ठीक है, मुझे पता है, पास में बोल दिया है, but in front of group of people he will never leave my side and पर्सनली बोल देगा ये क्या बोला है भाई, are you crazy? Are you crazy? ये क्या बोला है? Okay, हाँ. Green flag. ग्रीन फ्लैग्स की बात That's करते a हैं green ना, flag. दैट्स अ ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग की बात करते हैं। रिलेशनशिप में यू गाइस आर सुपर मैच्योर, यू आर लाइक अ जेन ज़ी, यू आर लाइक अ जेन ज़ी, सॉरी ब्रो, बट हां, व्हाट डू यू थिंक? बूढ़ा बोला ना हमें, तूने बूढ़ा बोला ना, काई नहीं है। अपने आप को क्या बोल रहा है तू ये बता। कुत्ते तू 2-3 ही साल छोटा है मेरे से। तो अब मेरी उम्र क्या है कुत्ते? हम सेम उम्र के, ये चूतिया। नहीं सर यार, नहीं अच्छा ओके। तो रिलेशनशिप में व्हाट डू यू थिंक आर लाइक फंडामेंटल पिलर्स की रिलेशनशिप में ये चीज तो होनी चाहिए, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर कंसिडरेशन या फिर तुम्हारा कमिटमेंट हो गया, तुम्हारा ऑनेस्टी हो गया। व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू इज अ फकिंग ग्रीन फ्लैग? ये नहीं है तो मैं नहीं हूं टाइप्स। व्हाट डू यू थिंक? मतलब तुम दोनों का चॉइस नहीं है, बट भी है, बट you can I think open communication. Like, so the difference between a green and a red flag is that you can't really communicate. Even if you fighting is healthy communication as well, but even if you fight and all, if you can't put your point across, if you can't tell them why you are distressed, what problem you're having, it's not a good thing, it's not healthy. But if once you're fighting and you're telling them कि देखो मेरे को ये issue हो रहा है, साले मेरे को नहीं पसंद तू क्या कर रहा है, okay, if you can tell them that honestly and you can just kind of vent and tell them ki this is not cool dude, this is not okay, that is just the difference between, that is the line between a good and a bad relationship, where you can just say that okay, this is not cool, I did not like this and this is not healthy and you need to correct this, and they correct that, and that is So what that's a green flag only if the other person understands कि क्या बोल रहे हो। बहुत लोग ना उल्टा भी करने की कोशिश करते exactly हैं। हाँ मतलब क्या इसकी से हो गए तो यही करूंगा। exactly. So Atul and I have this ये basically pact कि बहुत बार क्या होता है ना कि मैं उसको बोल देती हूँ कुत्ते साले ऐसे कर रहा है तू, like we talk like friends, right? So कभी कभी रोस्टिंग का लेवल चल जाता है बहुत ऊपर तक from both sides. So तो ये is कि you don't, अगर if you don't like something don't keep it inside. अगर मैंने बोला कुछ which offends you, उसी moment you establish, bro 1 second, I was not okay with what you ये just said. ज़्यादा हो I गया। think this is one of This the is most beautiful yeah, things, bro. absolutely. रिलेशनशिप्स पता फकअप क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, ये अंदर रह जाती हैं, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नो दे काइंड ऑफ बिल्ड अप, Yep. एंड देन इट फक्स विद द रिलेशनशिप। अगर तुम एवरी टाइम यू फकिंग पेन पॉइंट हो कि भाई दिस इज नॉट ओके, एंड यू मेरे लिए पर्सनली लॉजिकल रीजनिंग इज फकिंग इंपॉर्टेंट। Yeah, you just take it all out. इट इज You एलआर, just मेरे like- लिए एलआर बहुत इंपॉर्टेंट है Yeah, ब्रो। but yeah. वो logical reason, there are times my boyfriend says something and I don't just not like, मेरे को फीलिंग अच्छी नहीं लगी, तूने जब बोला बस नहीं अच्छी लगी, मुझे नहीं पता क्यों, मैं बोल दूंगी ब्रो। देयर आर टाइम्स जब होता है हमारे बीच में, दिस फॉर मी दिस इज स्टिल एन अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन वेयर आई टेल हिम लुक यू सेड दिस, आई डिड नॉट लाइक इट, और यू डिड दिस, आई डिड नॉट लाइक इट, has the I set the boundary straight, you have to listen to it, you don't want to follow it, it's fine, you don't follow it, but then I will leave because I just did not like it. Yeah, personally I genuinely am like an opposite person इस वाले particular sense में I am like okay, if you don't like something tell me why don't you like it. मैं अपने दिमाग में पूरी स्टोरी बनाऊंगा, अच्छा ठीक है इसका बैकग्राउंड ऐसा था ये, okay, now you don't like it, I understand, but if you're telling me something you just don't like it because you don't like it, that's stupid to me, that is stupid to me. मेरे को लॉजिक चाहिए ब्रो। अच्छा मेरे को एक बात बता, इफ मतलब इफ यू आर सेइंग समथिंग, ठीक है, यू डोंट लाइक इट एंड कंप्लीटली ओके, मेरे को ये तू बता कि 3rd क्लास में तेरे साथ किसी ने ऐसा किया था, 7th क्लास में तेरे साथ किसी ने ऐसा किया था, 12th में जब तूने 12th जिस दिन तेरा खत्म हुआ उस दिन ऐसा हुआ था, आई एम ओके विद इट, बट यू सेइंग कि आई डोंट लाइक दिस, आगे मुझे पसंद नहीं तू उस लड़की से बात करे। तू बता मेरे को ब्रो, क्योंकि tell तेरे me एक्स why. बॉयफ्रेंड ने एक, तू मना करती थी, तेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने उस बंदी से बात करी और तेरे को चीट किया उसके ऊपर, इट मेक्स सेंस क्योंकि तेरा ट्रॉमा है वो, आई Also like अंडरस्टैंड, that बट जस्ट बिकॉज़ lady- यू डोंट लाइक इट एंड यू डोंट हैव अ रीजन, इट्स स्टूपिड टू मी, आई एम नो ऑफेंस। No, so these are not like, ऐसे नहीं होता कि उसने किसी से बात करी, it's like पता नहीं, maybe I had a lot of like I had walls around me before coming into this relationship and I've broken most of them. There are still few things I need to work on, like I know it,
probably I have a reason. I'm still trying to figure it हाँ, out. वो- ठीक वो- है? हाँ, makes sense. तो मैं बोलती हूँ कि right now I don't know the explanation, but I did not just like the way how But I this is felt. also okay. This is okay. You right now don't know it. You'll take your time. You'll figure it out, and then you'll come back and tell the reason. But tell the reason, man. Yeah, of course. The thing is, and the thing, we're talking about the greens, and the thing is, that guy is very patient about it. He's like, okay, fine, take your time. If you don't want to talk about it, you don't talk about it. If सही you talk- लौंडा है भाई ये But कौन that, है that ये? again comes down to communication, right? It's Yeah. just like No, it's I just would that- not give it to him. He's Yeah. an introvert. I'm an extrovert. I'm a weird extrovert. I'm an extrovert, but I don't But want it's basically like तू मुझे बता कि what is distressing you, what Yeah. do you like, what is okay with Yeah, you, yeah. right? नहीं लेकिन I मेरे mean, को you इसका set point your boundary, नहीं, but yeah. इसका पॉइंट मेरे को समझ आ रहा है. कभी कभी ये होता है कि मतलब मे बी तेरे पर्टिकुलर केस में यू आर अनेबल टू फाइंड योर थिंगी Yeah. कि व्हाई डोंट यू लाइक इट, बट व्हेन Yeah. यू टेक टाइम, व्हेन यू लाइक इन अ कामर स्पेस, यू लाइक उस कुत्ते ने ऐसा किया, मेरे को ये पसंद नहीं आया कि उस टाइम ये हुआ था. Yeah, थक गई ब्रो. Then it's okay. Then it's Yeah, okay. yeah, Then I kind of It understand. can but also be like उस कुत्ते ने ऐसा किया मुझे पसंद नहीं है पर एक्चुअली उसकी गलती नहीं थी. It comes मैं from ही me. चूतिया हूँ. मेरा बुरा Sorry, दिन bro. जा रहा था, मेरे को किसी पे निकालना था, मैंने निकाल दिया. It's like that. At times होता है क्या होता है? Yeah. I'm PMSing. Yeah, I absolutely. am mad at something. Yeah. And that बेचारा I वो totally get it. I बहुत सुन totally लेता है. relate बट to मैं वही that. कह रहा हूँ, अगर if you're PMSing, तूने अगर ये बता दिया कि देख दोस्त ये वो 4 दिन है. तेरे को पता है? But I'm listen, PMSing. one second. Does your husband know when you're PMSing? So मेरा मानना है ये कि me PMSing is not an excuse for me being rude to someone No, else. but does he know that? Because my husband doesn't know it. Still, आज तक. I आज do तक know नहीं that पता. I don't PMS these days. No, I PM. I am PMSing, That is dude. that. But yeah, I mean like I'm like अगर अभी तक PMSing. तो figure out हो जाना चाहिए था, but know, नहीं know. होता. But I'm like just figure it fucking out. Like I am. No. Now. No, you don't do that. No, it's important. Krishanu, bhai, I love you. Ask her. Come on, why would you ask him? Bro, ये figuring out वाला stuff ना, I fucking hate it, man. I don't No, like no. it. I fucking hate it. No, you figure out. Why the fuck will I figure out? Who am I? Am I Albert Einstein? Do I like do these? 4 महीने नहीं हुए, 14 साल हो गए. But अरे still, तो I आप feel I'm so sorry. तू अगर आप उसको ये बता दो कि भाई ये वो 4 दिन है, उसके लिए आसान हो जाएगा ना. Why you making it difficult for him, bro? Is what I feel. That's true. Just tell him. I no, agree कि- with you. I agree. No man, this is not done. I don't want to figure out stuff. I have a lot of things to figure out about life, man. I wanna figure out what I wanna watch on YouTube, man. It's okay, breathe. No, but PMS But you नहीं get the करती point, मैं. But pregnancy hormones are a bitch. Yeah, ठीक है? yeah, that no, but sometimes let me tell you this. Okay, Even you don't know. okay, how PMS works Yeah, is yeah, that yeah. you yourself don't know Don't what's know. happening. Okay, you see yourself from a third person perspective. You're being an asshole. You're being a bitch, and you are yourself kind of rationalizing in your head that why the fuck am I doing this? But then you're just doing And it. you're just doing it, okay? And you don't And then later realize you cry. yourself, and later you're like, oh wait, मेरा period शुरू हो गया. Oh damn, this was the हाँ, reason. period tracker. And that happens, yeah. And then you're like, oh shit. So you don't even know yourself. That's the problem. Then you go back and tell him, na, see, I was yeah, wrong. yeah, and then Bro. you go back and say, oh this. So sometimes Krishanu does realize that, oh okay, I get it. मैंने थोड़ा 2+2 कर लिया, समझ आ गया. पिछले महीने इस टाइम पे यही हुआ था. इस लड़के ने मेरे साथ यही किया. एक क्वेश्चन आप दोनों से, ठीक है? I want to ask, देखो, what are the 5 green flags to marry someone? Like genuinely. 5? Or maybe 3. Okay, अरे 5 शादी के निकल लिए, जाएंगे. So one is definitely that you need to laugh at each other, with each other. Definitely. Like And- it, I like it. Yeah, and secondly, it is that you need to have open communication completely. Like if you have a problem, you tell them. So those of you who don't know what open communication is, you go to your balcony and you start communicating with random people. That is open communication. Akansha. And okay, I'll tell you one more thing. You need to be uncomfortably close. Okay, you can fart with each other. You can poop, with the door open. You can show that you burp. You are a human being. You have bad morning breath. Okay, all Yeah, of but- that is okay, and yeah, that's fine. You do that. You accept that about each other. You fart inside blankets and you make them smell it, right? Like that. या मैं Yeah. किसी के साथ 24 घंटे तो 24 घंटे नहीं पा देगा तू. मैं कोने में जाके पा दूंगा. मेरे को ये लगता है कि अगर
नहीं हाँ you guys are right, but मेरे दिमाग में ये सीन है कि I want to have somebody's image in my head in a certain way maybe. मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं आप- है। No. See, that's what you hold for like celebrities. You have an aspirational image of them, right? Because when you look at like a Madhuri Dixit or an Alia Bhatt, you're like, oh, ये तो लोग टट्टी नहीं करते होंगे यार, ये पॉटी नहीं करते होंगे. But these are like aspirational images But of understand, people, no, right? if I really like someone, I absolutely love someone. No, and but then when I you see her fart, I'm like, bro. But when you truly love someone, you see them as a human being. You see them as flawed. You see them as a person who has their own quirks, who has their own flaws, who has their own like very uncomfortable bodily normal sensations that they have. Yeah, Without all of that, you like the idea of that person, not Yeah. that person itself. No, I like the person and the idea, but still, there's an idea But that it I will want to come. change. Maybe you're very early on in your relationship Yeah. because it's very uncomfortable to fart in an early phase of your relationship. वैसे ही मैं जो पहले डेट पे मिले तो washroom में वो अपने आप हो जाएगा, तेरे को पता भी वो नहीं हाँ, चलेगा। but जब यार no तेरे bro, को no, मेरे को अभी नहीं जानना है bro. जब तेरे I को don't want to know. No. farts, No. burps, dandruff वगैरह की conversation शुरू हो I'm okay जाएंगी with ना, dandruff. I'm not okay तब with तुम farts, शादी man. कर सकते हो. I'm not okay with So farts. मेरे रिक्वायरमेंट क्या है? मेरा तो बहुत प्रैक्टिकल. She told you like intangible things. I'll tell you a few tangible things as well. Tangible क्या होता है भाई यार हिंदी में बोलो यार. अरे जिस प्रैक्टिकल चीज को तुम टच कर हाँ, सकते हो, कर- जिसको practical. हाँ ठीक है. हाँ. तो पीछे बैठो ना. वो ये सब होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख ले भाई. हाँ ये. इंडिपेंडेंट होने चाहिए दोनों फाइनेंशियली. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. You feel. और दूसरा बात है कि तुमको ना यार बात करो ये सब चीज़ों के बारे में कि बच्चे चाहिए नहीं चाहिए. ये कर लेना चाहिए पहले. Like if you're okay with dogs, if you're okay with babies, if you're okay, like ये ना एक तो superficial conversation होता है कि तुमको Game of Thrones पसंद है कि Breaking Bad. It's okay if you don't like the same things, यार. It's fine. At one level, it's fine. It's a very सीमा तपाड़िया thing कि मेरे को same shows पसंद है, मेरे को ये पसंद है, वो पसंद है. That's okay. That's a very superficial thing which you learn to love about each other after a point. Yeah. I'm sorry. बट सब बात करते हैं यार. Yeah, but there are things that there are very fundamental things, like she said, if you want kids, if the way you handle finances, the way you want to live, the kind of principles you have, the kind of political Principles are orientation you have. It's those are the things that really matter. It's okay if you don't watch Breaking Bad. वैल्यूज पता होने चाहिए यार एक दूसरे के. कि पता चला ब्याह हो गया, उसका पता चला कि इसको तो बच्चे ही नहीं चाहिए थे. दैट पर्सन इज अ चाइल्ड फ्री पर्सन. फिर रिलीजन, बहुत लोगों को प्रॉब्लम. इफ यू हैव लाइक डिफरेंट रिलीजियस ये बिलीव्स, दैट्स फाइन. अगर तुम But again, so the thing is, so okay, with me and Krishanu, we have very different religious beliefs. I'm an atheist. I'm a complete atheist, but Krishanu is a believer. But we respect that about each other. We're That's okay good. with Yeah, each other. that's good. He prays like once a week, and I don't want any religious symbolism in the house. High five. Which he's okay with, which is fine, which we respect about each other. So that's the kind of level of compromise that you need to reach. Like what she said about compromise is good compromise. मेरा Right. अतुल का भी यही है. आई एम वेरी स्पिरिचुअल, आई एम नॉट रिलीजियस, बट ही इज वेरी रिलीजियस. सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है. दे कांट बी विद अ पार्टनर हु इज नॉट on the same religious spectrum as like them. हम लोग, we don't try to impose our Impose opinions on each other. That makes sense. We respect each other's boundaries, and we're like, cool, it's okay if you pray once a week, it's okay if you don't want to do that and you think it's a waste of time. It's okay, it's fine. You know, you're both okay in your ends, and yeah, that's the good compromise that we've arrived at. This kind of makes sense, but Yeah. if you want to marry me, girl, you gotta watch Breaking Bad. If you don't like Breaking Bad, I don't like you. अबे Yeah. तू मुझे बता रहा था that you really hate when Yeah, but girls fake orgasm. I fucking hate when girls fake orgasm because I'm good with body language and I'm extremely good with touches. I know when somebody is faking an orgasm. If you don't orgasm, just tell me, bro. I'll change Yeah. my techniques. I'm And okay, improvise. so and also, you know, this whole perception about sex becomes very boring after marriage It is does. an absolute myth. Because once you're at a level where you're so comfortable with each other, you communicate what you like and what you want in sex, and it's
so much better. It's amazing. Like, you know, when you're at that Especially for stage. women, Yeah. Because you tell them कि मेरे को अभी नहीं हो रहा, अभी थोड़ा you need to like थोड़ा ये कर, go थोड़ा वो on कर, a little थोड़ा bit यहाँ more. थोड़ा और करो ये तो You know- फिर होगा क्लाइमैक्स. अभी बस 2 मिनट और ये जो कर रहे थे मेरे ना, को ये चाहिए ब्रो, ये सही मेरे था. को ना यही चाहिए. हाँ. मेरे को ये मत दिखा कि यार you're saying just because I'm a man and you Just think you go will on for 2 hurt my. and I'll be good. Like that. You know, That is what you want. statistics से क्या statistics Yeah. basically say that women orgasm more as they grow older because we learn that what we want. Yeah. यार का closing statements, yes. End तो करो. तू छोटी बच्ची है, तू बता क्या सीखा तूने आज? मेरे को तो अभी बहुत कुछ I need to work on myself a lot because while I was saying something I still felt a little uncomfortable जो कि मुझे नहीं होना चाहिए था इस But that's field. okay. Yeah. So I think there is a long way for me to go and आप लोगों से सुना कि क्या होना चाहिए आपके फ्यूचर पार्टनर में and clearly I think वो सब है but ऐसा है there are few things होना like that needs to be worked upon from my end and from his end and basically all of this relationship, toxic relationship, I feel from the toxicity I had, that relationship had changed me in a good way and also in some way bad ways also, but all of this is a learning process and सीखते रहना पड़ेगा ब्रो. और क्या कर सकती हूँ, चेंज करते रहना पड़ेगा क्योंकि कभी भी मैं तो परफेक्ट नहीं होने वाली, मैं हमेशा स्टूपिड चीजें बोल देती हूँ. But Well, that's nice, man. I mean, that's kind of organic. so yeah, that's how it is and that's it. And I had a great time. Same here, man. Fucking great, man. I mean, आरुषि सबसे पहले इधर हो यार. आप इधर हो. You too, man. अरे आप तो हमारे साथ की हो, ये मुझे बस एक चीज बोलनी है. I was not able to mention this. So आकांक्षा और मैं ऑफिस में बैठते थे कभी-कभी साथ में and she had told certain things about her personal life and that taught me a few things, okay? And I take a lot of inspiration from her and actually it's कुछ चाहिए, कुछ actually पूछना होता है when I think I'm in a like personal situation जहाँ मुझे नहीं समझ आता मैं किस बड़े से बात कर सकती हूँ. So I actually approach her at times. मेरी तारीफ कर रहा हूँ, मेरी तारीफ. Shut up. अरे एक दो लाइन बोल दे यार. No, genuinely that is genuine है. मैंने बहुत questionable लोगों को डेट किया है और इन्होंने मुझे question किया है उस चीज पे कि क्यों किया है. मेरी तारीफ कर देख ले. Shut up. जोर कर Moving बोल. on to you. Fucking hell, man. नहीं, honestly, मतलब I completely concur with what she's saying. We've had great conversations and I've enjoyed your company. And आप मेरे को जो बोलते हो आप आरुषि, we've also talked for a while about serious things and I genuinely respect your decisions. This particular day, I personally loved it. It was fucking great. Thank you, Arushi, for doing this with us. And एक तू ये तो बहुत दिन बाद आई, इसका क्या कैसा अरे, how was your day? I shut up, bro. I remember Azerbaijan's capital, which is Baku. इन्होंने फोन देखा है बीच में, मैं बता रहा हूँ. सुना इसका शुरू से दिमाग आधा उधर ही था. हाँ कि साले ने ऐसे कैसे मेरे को अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल दिया. मैं अपने बंदे के साथ पाती हूँ. Sorry, bro. क्योंकि वो इतनी कॉम्पिटिटिव है, वो शुरू Yeah. से वही सोच रही थी. So Baku is the capital of Azerbaijan. But I as remember art that. student, we were fucking, bro. I missed you, man. And I would love to I see you missed again, you. man. I mean, I really enjoyed this podcast and I also after hearing all your stories I'm very happy that I'm married to a very sorted Yeah, guy who bro. is not a red flag who is okay and basically like if I mean a message that I'd like to tell people is that you know there are a lot of things that you need to look for in a partner. Is that one of the things that you need to see is that it does not need to make sense to anyone else Yeah. but you. LR. If it- LR important है, बहनचोद logic Yeah, reasoning. if it makes sense to you, it does not need to make sense to anyone else Yes. in this world. And बस मतलब just like go for it, यार. It's okay. If it makes sense to you, it's awesome. It's best. क्लोजिंग स्टेटमेंट में ये बताना चाहूंगी कि किसी भी रिलेशनशिप में दूसरे के रेड और ग्रीन फ्लैग से ज्यादा जरूरी आपके रेड और ग्रीन फ्लैग है. मेक श्योर यू हैव गुड एनफ सेल्फ स्टीम, यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ एनफ एंड यू नो व्हाट यू वांट, यू डोंट वांट बिफोर गेटिंग इनटू एनी रिलेशनशिप. भले प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, चाहे तुम्हारे रिलेटिव्स के साथ भी डील कर रहे हो, पहले फिगर आउट व्हाट यू आर. और थोड़ा हमारी थोड़ा तरफ से बाउंड्री सेट कर लो. हमारी तरफ से वही है कि जहाँ पे आपको दिक्कत लगे वहीं पे पिन पॉइंट करिए. पहली. दूसरी, LR बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लॉजिक रीजनिंग. अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो हमें बताइए काहे पसंद नहीं है, ठीक है. हमको समझ आना चाहिए, हुआ तभी क्लियर होगा. बट पर्सनली आई एब्सोल्युटली लव्ड इट दिस इवनिंग.
with these एक girls. चीज बोलना है, मैंने नहीं कुछ किसी को कुछ नहीं बोला क्योंकि भाई मेरे को कुछ नहीं पता, मैं अभी भी सीख रही हूँ, मैं लर्निंग प्रोसेस में, तो आई एम नोबडी टू से एनीथिंग, सो या इसलिए मैंने किसी को नहीं बोला व्हाट वाज द टेक फ्रॉम, मैं अपने आप बारे में बात कर रही थी. It doesn't Wow. matter. It doesn't matter how old you are. You are very mature. And She's you're not okay. mature than and me. you I'm like shut the up. greatest mature person. You've More had than enough- Cristiano and more than you- Atul. I'm like the greatest maturest You've person had enough ever. growth in your पॉडकास्ट life. हैज रीच्ड टू अ पॉइंट जहां मैं अकेली सोबर हूं अभी. You have no option. Sorry to say, but yeah, the second person in your fucking body is like dictating terms for you right now. But yeah. ए बाबू मेरा आइस अच्छा, सुनो, ए सुनो। बाबू आज ए बाबू इधर चढ़ गई है. और मैं बताऊं एक्चुअली ओके डेस्क के ग्रीन फ्लैग क्या है कि आप लोग ना इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमें प्लीज बताएं कि आपका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था क्या. हम पढ़ रहे हैं. आरुषि आपको भी पढ़ना है कमेंट्स. Subscribe पढ़ना है. करें. सब्सक्राइब बाद में, पहले कमेंट्स पढ़ो. पहले बोलो कि मैं पढ़ रही हूँ कमेंट्स. Comments पढ़ मैं कमेंट पढ़ रही है. नहीं ए पढ़ ए मैं पढ़ रहा हूँ. I love. Please give me a thumbs up in the comments. Yeah, What please, would हाँ. you- if you want to see me again. We would love to see you again. Yeah. If you And think I have the wisdom of a 60-year-old. you definitely do, and please don't forget to subscribe to the greatest channel on this planet, which is beautifully okay tested. Thank you guys. बहुत मजा आया मेरे को यार, बड़ा मजा आया. सालों में खत्म नहीं करती तो तुम लोग पियक्कड़ लोग खत्म ही नहीं होने देते ये वीडियो. Come here, baby. बाबू. थैंक यू. बहुत सुंदर. वो ग्रेट सीन था. मेरे को स्टार्टिंग में बहुत इंटिमिडेटिंग लग रहा था कि मेरी हो जाएगी, बट मेरे को अच्छा लगा. बीच में फटी हुई थी मेरी. जब तुम सब I'm going to look after you. इसलिए तो यही हूँ. फंक्टी मॉल. But say that. Great scene. अगर आप वीडियो के इस कोने तक पहुंच चुके हो तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द होल वीडियो. आई एम रीडिंग ऑल द कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अस इतना सारा प्यार आउट ऑफ सिलेबस के लिए. पहली बात ये, अभी तक हम हर सैटरडे को एक एपिसोड अपलोड कर रहे थे, लेकिन किसी भी चीज को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है, थोड़ी और मेहनत लगती है, थोड़ी आइडिएशन लगती है. तो अब हर ऑल्टरनेट सैटरडेज पे आउट ऑफ सिलेबस आएगा. तो एवरी सेकेंड एंड एवरी फोर्थ सैटरडे ऑफ एवरी मंथ यू विल गेट एन आउट ऑफ सिलेबस का एपिसोड. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप शावरिंग ऑल द लव. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ड्रिंक वाटर, ईट हेल्दी फूड. चीयर्स. आई विल सी यू लेटर. बाय.